start, sir. Yeah. So every day is a new day of opportunities. We might have to face many challenges, but we have to grab those opportunities to become better day by day. With these words, I would like to start the session for today. We are so glad to have you all here today, and we appreciate your presence during your busy schedule. A very warm good morning to one and all attending this program. It's my pleasure to welcome everyone in our online physical education and community coaching program. I, Dr. Naren Gangwar, Assistant Professor, Sai LNCP, on behalf of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, Khelo India, our principal, Dr. G. Kishore Sir, Sai LNCP, Trivandrum, and on my personal behalf, would like to take this opportunity to welcome all the participants from across the country. I would like to extend a special welcome to our esteemed speaker for the session, Mr. Sujit Panigrahi sir, CEO Fitness 365 and Joint Coordinator for this program. Let me introduce about speaker. I would like to introduce about our speaker. Sir is CEO Fitness 365, which runs a structured physical education and sports coaching program in more than 1,500 schools across the country. Fitness 365 is managing the Khelo India Fitness Assessment Program for Sport 30 of India, Swasth Bacche Swasth Bharat program for KBS, and is also part of Fit India program. Sir is also a part of CBSE and NCERT curriculum designing committee. Sir is going to deal the topic age appropriate activities for class 5 and planning and executing a play session. And ladies and gentlemen, we have with us a very renowned another speaker with us, Dr. Birendra Kumar Jhanjria sir. He's assistant professor in Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior, Madhya Pradesh. Sir is a very experienced speaker and a very renowned name in the field of physical education and sports. Sir has a lot of experience to deal with the school kids, and he has also a part of Swachh Bacche program, and he has developed norms for Kendriya Vidyalaya children's, and he was having a experience to be with Madhya Pradesh Madhya Pradesh basketball team in senior nationals. He had, I'll tell you, has a lot of experience in presenting many research papers in workshop, conference, seminar, and he has also written many books in physical education and sports. So, ladies and gentlemen, without taking further more time, I would like to invite our speakers for the session. Over to you, sir, please. Yeah, good morning. Thank you so much, Gangwarji. It's been a pleasure to be working with LNCP Trivandrum in organizing both the batch 1 and batch 2 right now. So I'm very grateful to Sports Authority of India, to Sai LNCP Trivandrum and Khelo India. Also, just wanted to make a little correction. Jhanjria ji has become associate professor now. So congratulations to him. So yeah, so last time in batch 1, he had just released his book, and in batch 2, it is associate professor. So hopefully in batch 3, some other good news will come. So we are going to work together in this session. So both of us, and Gangwarji, you can always chip in whenever you want to. I mean, free to, because this is for everyone. So basically, the last few sessions have been very interesting. I think with the Pulela Gopichandji talking about physical literacy, that was session 1. Then Kishore sir talked about very interesting roles and responsibility of a physical education teacher. Very informative session, where he talked about the importance of physical movement being an integral part of any human, from birth to death. So he talked about womb to tomb is the concept that he talked about. We had session on Fit India by Mr. Rohit Khanna, where he talked about how to become Fit India school and the whole school approach to fitness. That was very important. And yesterday, Dr. Ajit and Dr. Jhanjria talked about
integrating fitness in the school curriculum, where they talked about NCERT curriculum. So yesterday they talked about the overall structure of a PE program. What are the goals of a PE program? What are the three main things, three aspects of that program? So I'm going to start with that. Just a small recap of yesterday, and then we'll get into the other part of it. So let me just share the session. Yeah. So this is what I'm going to talk about, age-appropriate progressive curriculum, the importance of that, because yesterday we talked about the goals of physical education, then the activities for pre-nursery going up to class 5, and tomorrow we'll have session on class 6 to 12. So today we are going to talk about activities for pre-nursery up to 5th. So broadly, when we look at it, we are looking at what is the goal of a typical PE program. So the goal of a physical education program is basically about what Ms. Gopi Chandi talked about physical literacy, talked about a lifelong values of fitness and active lifestyle. So that's the most important thing. Any physical education program is an inclusive program where every single child is important. Every single child is important. And in a school context, it also extends to teachers, non-teaching staff, and parents also. So it is about, since we are talking about school, it's basically about enabling students to demonstrate individually and also with others. So the social skill is very important. Individual skill is important. Physical skills, practices, and values. Values are extremely important, where you enjoy a lifetime of active and healthy living. So we also yesterday looked at the 7 goals of physical education program, where we talked about acquiring a range of movement skills. We talked about understanding and applying those concepts in a range of physical activities. Movement is important. Movement is the most important thing, and today we are going to focus on movement. The goal 1 and goal 2 is what we are going to talk about today. Nursery to class 5, importance of developing the right movement skills. Goal 3 is basically about safe practices, very important. I mean, whenever you're doing anything, you have to make sure that it's all safe practices are embedded in a physical education program. And with respect to self and also with this thing. Social behavior, very important, because you need to have teamwork, collaboration, competition. Excellence is important, whereas winning is not very important. Excellence is a very important. You compete, but you need to collaborate and compete. 5th goal is basically about health. Health is a very important outcome of a PE program has to be health. Health is a very important thing. The more you participate in regular PE activities, you improve your health. 5th is enjoying and value the benefits of living in a physically active and healthy lifestyle. When you're physically active, you are happy. So happiness is a very important aspect of physical education program. Fitness, health, and happiness are very important. All the 3 things are important. And the last thing is about excellence. It is basically the middle years are very important in any school context, whether you study mathematics, science, English, social science, sports, art and dance. You will always excel in something. So a child does not need to excel only in sports. A child does not need to excel only in mathematics or only in social science. Whatever they're good at, the last goal has to be excellence. And excellence is basically about whatever you are, give it a plus. See, if my fitness level is at level 4, can I become a level 3 or level 2 or a level 1 in terms of physical fitness? So excellence is an outcome of the program. It cannot be the primary goal. Then we learned about 3 important aspects of a learning outcome. First, and the primary outcome is an active lifestyle. Every single child, each child is important, and hence fitness and active lifestyle is the most important outcome of a PE program. Secondly, we learned about sports pursuit. A child needs to be exposed to a variety of sports. That's very important. Choice is important. I have 2 sons. One is in class 10, the other one's in class 6. We had actually put both of them on martial arts, swimming, and tennis. But the second son, he has moved from tennis to golf. But the idea is that he actually had a variety of sports to play with. He played variety of sports, but one of them plays tennis, the other one plays football, because that's something that they start liking. But before that, they need to be exposed to variety of sports as a parent also. And the last one, few students will basically start doing well when it comes to their potential. So talent identification is important. Do it. Find talent at 8 so that they become champion by 18. But sporting excellence pathways has to be very different from normal this thing. Dr. G. Kishore actually talked about an overall framework where
a participation framework has to be different, a excellence framework has to be different. So participation in sports has to be based on fitness and active lifestyle and sports pursuit, where child actually plays a variety of sports. And excellence has to be a different thing. It's a small aspect. So this is the overall framework that we talked about. So just a recap, fitness and active lifestyle is the most important one. Sports pursuit is the second one. And the third one is sports excellence pathways. And since we are today going to focus on age 3 to 10, so that is basically about movement education. We are going to talk about acquisition of fundamental movement skills, where we are talking about three things: body, space, and effort awareness. Knowing about all your body parts, using them rightly. Space awareness, in and around. Direction is very important. Effort is important. So we're going to talk about it. And also about general fitness. Learning a range of movement experiences is very important, and that is what we're going to focus on today. And then when the child actually crosses, let's say class 3 onwards, is when they actually get exposed to a variety of sports. So overall skills and concepts, involvement in a range of physical and sporting experiences is important. And the values are very important when you're any activity: respect, responsibility, resilience, integrity, care, harmony, competition, collaboration. These are the things which are very important. Sports में आप सारे चीज सिखा सकते हैं. जो हमने कल एक भी चीज सिखा था कि when kids go to school, they don't go to a class. So it's an entire experience of social skills जो है वो हम सीखते हैं sports के through. It has to be fun, it has to be inclusive. And health related fitness, आज हम उसके बारे में बात करेंगे. And tomorrow, Dr. Sanjay Prajapati is going to talk about class 6th onwards, when he's going to talk about recreational participation, specialization, high performance, and sporting pursuit. These are the things that he is going to talk to you tomorrow. So I'm going to stick to, so both of us are going to stick to from pre-nursery going up to class 5th. ये basic framework है. जब बच्चा पैदा होता है, even before a child is born, one skill mother की पेट में जो बच्चा होता है, the child knows how to kick. Kicking is something that the child already knows. A movement, rolling is something that the child already knows. मतलब पैदा होने से पहले ही वो बच्चा kick करता है. तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको kicking सिखा रहे हैं, हम उसको better कर रहे हैं. But 0 to 2 years is a beginning skill. वो घर पे रहता है बच्चा, तब वो स्कूल नहीं जाता है. 2 साल के बाद या 3 साल के बाद स्कूल जाता है बच्चा. So from 0 to 2, what is it the child learns at home? The child learns how to crawl. The child learns how to sit. Sitting, crawling, walking. ये बेसिक चीज जो है वो घर पे सीखता है बच्चा, जो 0 से 2 years या 3 साल के. From 2 to 7 years or 3 to 7 years, हम जैसे भी सोचे उसको, ये थोड़ा प्रोग्रेसिव है, तो कोई ऐसे लाइन नहीं बना सकते हम, बट दिस इज जस्ट अ प्रोग्रेशन. तो बच्चों को 3 तरह का स्किल्स बच्चा सीखता है. वन इज कॉल्ड लोकोमोटर स्किल्स, जिसमें आपको कोई भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है. The child has born with certain talent. The child needs to learn, so we need to teach them basic skills of walking, running, jumping, hopping, skipping, and dodging. ये जो skills हैं, these are very fundamental skills. Locomotor skills कहते हैं, जिसमें आपको आपकी basic body parts use कर रहे हैं, आप और कोई और चीज use नहीं कर रहे हैं, basic चीज. सेकेंड हो गया मैनिपुलेटिव स्किल्स. मैनिपुलेटिव स्किल्स का मतलब है कि अब जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन इसको खेलते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए होता है. जब आपको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, तो किसी ऑब्जेक्ट के साथ जब आप कुछ करते हैं, कैचिंग, थ्रोइंग, स्ट्राइकिंग, हैंड एंड फीट के साथ किकिंग विद हैंड, ड्रिबलिंग विद फीट. तो ये हैंड और फीट रिलेटेड लिखा हुआ इसलिए विद इक्विपमेंट, मतलब जैसे ड्रिबलिंग हो गया, ड्रिबलिंग विद हैंड, ड्रिबलिंग विद फीट, और किकिंग हो गया, पासिंग हो गया. तो ये सारी चीजें आर बेसिक थिंग्स जो आप सीखते हैं. दिस आर कॉल्ड मैनिपुलेटिव स्किल्स. तीसरा हो गया स्टेबिलिटी स्किल्स और बॉडी मैनेजमेंट स्किल्स, हम कुछ भी उसको कह सकते हैं. तो उसमें हम लैंडिंग, जैसे हम जंप करते हैं तो उसके लैंडिंग, बैलेंसिंग, रोटेशन, वॉकिंग ऑन ए व्हील, ये सारे स्किल्स जो है बेसिक स्किल्स है ये. और ये जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनमें अदर थिंग दैट दे लव and also should be exposed to gymnastics, swimming, and rhythmic activities. बच्चों को म्यूजिक पसंद है, so rhythmic activities are very important. The next thing is basically about awareness, space, body, effort, relationship.
तो स्पेस जो है बच्चों को जब हम जैसे एक स्क्वायर बनाया हमने कहते हैं बॉल आप वहां फेंको 2 मीटर दूर है, तो चिल्ड्रन वुड लर्न कि उनको डिस्टेंस पता है, डायरेक्शन पता है, एफर्ट पता है, ये तीनों चीजें एक साथ पता हो रहा है कि अब जब थोड़ा सा पीछे उनको मूव कर देते हैं अगेन थ्रोइंग के लिए, या तो एक वॉल पे हम स्क्वायर बना देते हैं, हम उनको बोलते हैं कि आप वहां पे बॉल आपको फेंकना है, तो चिल्ड्रन लर्न हाउ टू थ्रो, दे लर्न डायरेक्शन, दे नो द एफर्ट। तो ये सारे स्किल्स हो सकते हैं। सिमिलरली कैचिंग, कैचिंग एक बड़े बॉल को कैच करना, एक छोटे बॉल को कैच करना, एक बाउंसिंग बॉल को कैच करना, ये सारी चीजें बच्चे सीखते हैं जब वो बहुत छोटे एज में। ये सारी चीजें बाउंसिंग बॉल, एक स्मॉल बॉल को कैच करना आर टू डिफरेंट थिंग्स। lot of children so getting them to walk on a straight line, एक सीधे लाइन में वॉक कर पाना बच्चे को, एक सांप के तरह जिगजैग सर्किट में वॉक करना, ये इंपॉर्टेंट है। जब ये थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं बच्चे, फ्रॉम 7 to 10 years, so 7 to 10 years who typically be from class 3 to 5 या उस तरीके से, तो in that age bracket typically children needs to be exposed to sports related movement, whatever you have learned early on you need to transition them, so I'm going to talk about it a little later। जैसे हम रनिंग या जंपिंग करते हैं, या when you run like a snake when you are small, but if the moment you give them a ball you start using the same skills जो हम running like a snake की तरह हम कर रहे हैं। झांझरिया जी आपको दिखाएंगे कुछ वीडियो, so where you are actually, but the moment you give them a football then you are learning to do dribbling with the ball, same cones के बीच में, so whatever you are learning uh, uh, without in early years you start using them in sports। Similarly you start getting introduced to the skills of athletics, swimming, gymnastics। ये जो है athletics, swimming, gymnastics जो है ये mother sports कहलाते हैं उनको, because that is important for any sports। फिर टीम और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स एक्चुअली हेल्प यू टू बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव। competition का ये होता है because you have to fend yourself, you have to win yourself, so you are dependent on yourself, whereas a team sports is a lot about social skills, it's a lot about strategy, it's a lot about collaboration, and someone will fail and someone will pick up, it's about different positions within a sport, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया, उसमें अलग अलग पोजिशंस हैं। सारे एक बैट्समैन और बॉलर और फील्डर और विकेट कीपर सबकी स्किल्स अलग अलग है, सो यू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है टीम स्पोर्ट्स में, एंड यू ऑलवेज हैव बैकअप, यू हैव टू ट्रस्ट द अदर पर्सन। राहुल द्रविड़ जो है, जैसे सचिन और सहवाग भी जब खेलने जाते हैं तो राहुल द्रविड़ आल्सो पुट्स ऑन हिज पैड्स बिकॉज़ यू नेवर नो he might need to go on the second ball itself, so there's a lot of ये जिसमें टीम स्पोर्ट्स का बहुत अपनी रेलेवेंस है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की अपनी रेलेवेंस है, बट एथलेटिक्स, स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक्स ये बेसिक फ्रेमवर्क है। बेसिक नर्सरी टू क्लास 5 के जब हम बात करते हैं या प्री नर्सरी से बात करते हैं, बेसिक लोकोमोटर स्किल्स, मैनिपुलेटिव स्किल्स और स्टेबिलिटी स्किल्स को पहले इंप्रूव करना है। जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग और रिदमिक एक्टिविटीज में दे हैव टू डू एक्टिविटीज एट स्पेस, body on effort के relationship important है, and when they grow a little older, let's say class 3 and 4 onwards, ये जो भी skills वो सीख रहे हैं उसको धीरे धीरे आप translate कीजिए to different sports, same skills are transferable। अब हम थोड़ा सा उसके example भी देखेंगे आगे जाके। Okay, now when we have learned about the age appropriate activities, we need to understand that what are the activities that students, kids from 0 to 5 can do. We need to provide them those activities, those exercises in which the learning element is there, at the same time fun, enjoyment, satisfaction and recreation is there। हम जानते हैं कि बच्चों को कलरफुल इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं एंड वैरायटी इज इम्पॉर्टेंट, तो हमें उनको वी नीड टू बी एज अ टीचर, वी नीड टू बी सो क्रिएटिव that students are involved, they are satisfied. So these are the you are seeing on the screen, these are the list of activities that you can organize for your students, for your kids, so that even you can see in the pictures, you are seeing very colorful equipments, you are seeing small hurdles, cones, markers, hoops and even water activities. So small activities, simple activities like rolling, crawling, walking, as Mr. Sujit said,
walking for a class for the student of a class 1 on walking on a straight line and walking on like a snake is bit a difficult skill, but still we if we are because coordination, balance are those elements which can be taught on the earlier age. It cannot be developed on a later age. So it is important that these elements should be developed in the school itself during their activity classes. So activities like balancing, swinging, spinning can be involved. You can involve them some activity like climbing on some wall or hanging or swimming there. बहुत से rope आप उसमें use कर सकते हैं, ठीक है. कैचिंग एंड थ्रोइंग जिसके अंदर आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन. कैचिंग एक सिंपल लगता है कि हम कोई भी बॉल आएगी हम लेकिन उसको कैच कर लेंगे, लेकिन आप एक ही क्लास में देखेंगे देयर आर वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स, सम ऑफ देम आर एबल टू कैच, सम आर नॉट. तो जो कैच कर लेते हैं इट इज़ ओके, देयर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इज ओके, बट कुछ का होता है कि बॉल पहले आ जाती है और देयर हैंड्स आर कमिंग आफ्टर. और तो इस तरह, लेकिन अगर हम इन एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करेंगे तो उनका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन हम डेवलप कर सकते हैं, और दिस इज द बेस्ट एज in which you can develop the neuromuscular coordination. And there are many other games like environment friendly. You can take them out for a nature trip. आप उनको बाहर अपने स्कूल में गार्डन में घुमा सकते हैं. और सॉन्ग, kids like rhythm music, so you can play some rhymes for them, some songs for them, so they are enjoying and they are playing, they are learning. So and you can introduce them to the water, because कई बार क्या होता है कि बच्चे को अगर पहले से वाटर का पानी से उसको टच नहीं करवाया जाता तो वो पानी से उसको डर लगने लग जाता है. तो अगर आपके स्कूल में आपके नियर बाई एरिया में इफ फैसिलिटीज देयर, तो यू कैन इंट्रोड्यूस water activities also to them, so that they get acquainted to them and they enjoy and they get learning and at the same time enjoyment. Next. And now let us see a few of the activities which you can do in the first let me show you few videos. In the first video we'll be showing you some gymnastic activities in which students are performing some forward rolls and crosses. Next you are seeing a video in which they are doing crab walk. This is circuit training. Yeah, so you can see that these activities without little bit of modification, you how students are enjoying. You can plan few circuits, you can plan some relay races, okay, with some equipments. If you are not having these equipments, you can arrange little bit. So this is the list of activities. Like yoga can be introduced, some yoga poses according to their capacity, animal poses, walks, ball games can be introduced, some challenges can be given, some circuits, you have seen a circuit, and folk, any kind of dance is more enjoyable. It can be a classical, it can be a western dance, folk dance, aerobics, zumba, anything can be introduced to them. And lot many games, small area games can be indoor or outdoor, can be used. They can do some on music, partner activities, gymnastic rallies, skipping, and indigenous and traditional game. What is you found in your locality can also be introduced to them, so that their development of multi physical can takes place. And in next, Mr. Sujit will be talking about simple activities. Yeah.
Yeah. So these are basically as Jandevi ji talked about. There are a lot of this. When you look at it, it's actually use a lot of music. Music is a very important aspect of a lot of activities that we do for younger children. Then there are a lot of activities which is around animal poses and walks. So I'm going to talk to you about some of those activities. I'll show you certain things that children actually love to do. But it's a mix of dance, it's a mix of music, it's a mix of gymnastics, simple activities. So let us look at some simple activities. So here are some simple activities that you can actually do. All children love uh, animals. They love birds. They love any living organism. So if you basically have things like walking like a butterfly, then you walk like a dolphin, then you do a bear walk, and you jump like a horse, galloping. Galloping is what they love. Penguin walk. So you keep your hand and you walk like this. You walk like a gorilla, where you are like making you with your chest this thing. Then the leaping, giraffe. Giraffe is like when you do your hand like this, and yeah. Elephant walk. You actually put a hand behind and you walk like this. You jump like a crab, kangaroo, forward rolls, backward rolls, jumping, running, hopping, star jumps. So basically, simple star jumps. Children actually love to do all this. Skipping is like you don't need skipping. You can just simply use a hand to do skipping. So actually you can tell them to do this thing. Side by side walks are very important. So children learn backward, walking backward, you're running backward. Running backward is so important. In cricket, you catch ball, right? So when you know how to. Similarly, in football, basketball, you have backward running, side running, front running. Then you do figure runs. Figure runs is like you say that today we are going to do 89 as a figure, and you run like 8 and 9. Or based on their own roll number, they can do that also. Or alphabet runs are very important. Interesting little activities like alphabet runs, or based on the theme for that particular day, you can actually you can do actual runs like that. So running in different shapes is very important. Tiptoeing also is like you run with just one leg. You can actually do that. You can also give them little Coke cans and put some rassi, and you actually walk so that they can actually put their feet inside that between the on the Coke can, and you put a rassi on that, and they can actually walk with that also. These are very simple activities that we are looking at and very simple to do. You can actually find a lot of activities on this URL also, fitnessresearcher.p/activities. You can see a lot of activities. This is what I was talking about when we talked about body, space, effort, and relationship awareness. One of the very important things is direction awareness. Direction awareness is basically about you do the same activity, but you can actually say that I want to run on a straight line, walk on a straight line, or do galloping on a straight line. Any activity that you do, you can do it on a straight line. Similarly, you can do the same thing on a curve. So you do a curve. So if you're kicking, if you are running, jumping, any activity that you want to do, you do it like a curve. Third thing is like a wave. Wave is like you actually you go on a smooth path, but it's like a wave. Zigzag is basically you must have seen the lot of agility circuits which are there, which are basically about zigzag running, where you can actually do it. Similarly, you can go back, go to the front, go up, go down. So a lot of activities that you do, you turn left, you turn right. You can also play games of opposites. When I say turn left, you actually turn right. So there's a lot. It actually develops a mental ability. I could say that Simon says go forward. So you can say that today the direction is that when I say go forward, you have to jump up. When I say go backward, you have to go to the left. So you can change the instruction that you give to children, and बच्चे जो है उसके हिसाब से वो change कर सकते हैं. हम जब कहेंगे go straight, you have to go to the side. If I say side, जैसे हम गाड़ी कभी चलाने की कोशिश करते हैं, सीधा जाने की कोशिश करते हैं, लेफ्ट चले जाते हैं. So you can actually tell children to कि straight का मतलब क्या है, up का मतलब क्या है, down का मतलब क्या है. So they can do all that. So these are some activities which we talked about, simple activities, direction awareness. And these are some activities. So there are a lot of activities which are there. As an example, ये आपके सामने थोड़ा सा ये छोटा है, but basically
There are a lot of games which are there, which is about uh, uh, which is on all of this. You can make any kind of game on manipulative skills or mixed skills. So basically, you say that you do running. So जैसे एक circuit है. First you do running for 10 meters. Then you have hula hoops जिसमें वो jump करके जाएंगे. Jump के बाद they can actually walk sidewards and they can do forward roll, backward roll. So you can actually create circuits. You can have tic-tac-toe games also जिसमें and then you can have running like a snake, running like a bear. So there are a lot of games that you can actually do with all of this. This is an example where, and one of the very important thing physical education program में कि हर बच्चा उसमें important होना चाहिए. ये जितना भी मैं आपको कुछ examples दिखा रहा हूँ. पहला वाला example है a mass PT. Mass PT का example है. Second है hula hoops के साथ you are becoming like a caterpillar. तो आप कैटरपिलर का गेम आप कर सकते हैं. बच्चे कोई किसी को छोड़ेंगे नहीं, बट जो भी स्टेप्स है यू कैन मेक इट लाइक ए वेव. मान लीजिए एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे. यू कैन से दैट लेफ्ट और राइट होके जाना है, सो यू हैव टू गो लाइक दिस, और यू कैन गो ऊपर ये करके. और यू कैन एक्चुअली से फेस ईच अदर, सो मिरर मिरर, मतलब कंबाइंड होके ग्रुप. कोई एक पीछे की तरफ है तो कोई सामने की तरफ देख रहा है उसको. तो आप उसको सिमिलरली this is the third frame is basically about children pushing each other or pulling each other. You push each other, you pull each other. एक में अलग अलग forces है, opposite forces है, but opposite forces में pushing and pulling में अलग अलग forces चाहिए. Similarly, they can also you have partner. ये सारे partner games है. इसमें आप 3-legged race कर सकते हैं. आप उसमें pushing, pulling. Then there are a lot of exercises that you can do. Passing the ball. मतलब एक ने लिया आगे पीछे है तो मैं पीछे से बॉल को लिया और सामने की तरफ पास ऑन कर लिया. सो यू कैन एक्चुअली डू लॉट ऑफ दिस एक्टिविटीज आल्सो. पार्टनर गेम्स काफी कर सकते हैं. इंडिविजुअली अगर है सो दिस इज अबाउट यू टेक अ बैट. यू अगर आपके पास ये भी नहीं है, नॉर्मल बुक भी ले सकते हैं. इस तरीके से बुक लिया और उसके ऊपर आपने बॉल रखा एंड यू कैन एक्चुअली डू लॉट ऑफ ये बीन बैग हो या तो नॉर्मल पेपर से बॉल बना ले, तो कुछ भी कर सकते हैं. Similarly, ये जो है, this is basically also about lot of it needs a lot of skills in terms of आप एक से दूसरे को रोल किया, उसने वापस आपको भेजा. So इसमें ये काफी सारे skills इसमें चाहिए. उसमें आपको skills on in terms of hand, eye, leg, body, mind, सारे coordination skills है इसमें. And active assembly is a very important thing. Yesterday we talked about it. As I think active assembly बहुत important चीज है. बहुत सारे आप चीज एक्टिविटीज कर सकते हैं. You could see that it was a very small area जिसमें बहुत सारे बच्चे थे. एक स्पीच ये जो पूरा एरिया है उसके अंदर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बच्चे पैराशूट के साथ ये कर रहे हैं. तो इसमें कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है. कुछ बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं. तो ये सेम जगह का, ये सेम स्कूल का, ये सारे पिक्चर्स जो है सेम स्कूल में सेम टाइम में चल रहा है अलग अलग जगह पे. मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ. ये पूरा पिक्चर तुम देखें तो ये सारे बहुत सारे बच्चे 300 200 300 बच्चे ग्राउंड में हैं एंड ये सारे अलग अलग एक्टिविटीज है. यू कैन सी देयर ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स आल्सो. ये सिंगल डे पिक्चर है, सिंगल पीरियड का पिक्चर है ये सारे के सारे. Yeah, so very rightly talked about the full engagement of child, and another thing is each child count. कहने का मतलब है हर बच्चा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हर बच्चे के लिए हमारे पास इम्पोर्टेंस है. एज ए टीचर आपको क्लास का जो आखिरी बच्चा है उसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए. अभी हम एक आपको वीडियो दिखाएंगे. ये दिस वीडियो वाज फिल्म्ड इन हंगरी व्हेन आई वाज डूइंग माय कोर्स, और ये मेरे द्वारा ही फिल्म लिया गया है. तो इसके अंदर आपको दिखेगा एक रेड कलर की ड्रेस में एक बच्चा है. ही इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटी. तो आप देखिए कैसे एक टीचर उसको अपनी क्रिएटिविटी और अपने एफर्ट्स के साथ कैसे वो उस बच्चे को इन्वॉल्व करता है, और जो बच्चा रो रहा था वो कैसे खेलने लगता है, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा. सो प्लीज लेट अस सी दिस वीडियो.
ايش كمان؟ Now he is playing. Good motivator. Okay, so now you can see the child who was not involved, he was crying initially, but by the effort and creativity of the teacher, he started playing. So that's how we need to take efforts, and we should understand that each child matters. So we need to take care of this thing. Next, we'll see the video for for educational gymnast thing. इधर खड़े हो जाना. This is how, if you don't have facility, even you can teach in the ground the fundamental skills of gymnastics. Come. क्लास आज So it is very important because gymnastic is considered as the mother sports. So if whatever the facilities available, but we have to teach them these skills so that their sound base of your kids can be developed. Next, we are going to see some circuit in which you'll find a lot of equipments and a lot of activities. Balancing, how you can balance. Jumping over hurdles, you are seeing ladders by the side. Single leg, up. Start. By this, you can engage many students at a time, and you are seeing circuits are planned. So any circuit can be planned if the children are more in number. Then you can have hurdles, cones, markers, hula hoops. Likewise, you can plan the circuit, and at the time you can engage 30 to 40 students very effectively, and students will enjoy, and they will learn, and they will motivated for your next class also. Fast, Apurva. Arjun, पीछे हो जा. पीछे. Next, we'll be seeing the transfer of skills. In first video, we'll be seeing simple zigzag around the cones.
So this was simple zigzag. How it can be transferred to football dribbling? Let's see. So this is how we are satisfying the principle of progression also, how a simple skill can be progressed to the next higher level. So this is we need to incorporate in our PE classes. Yeah, so this is, thank you so much. I think what you talked about is very important. Any skill that we teach, काफी बार काफी सारे पेरेंट्स कहते हैं, मतलब ये एक चैलेंज होता है बिफोर द पी टीचर्स. पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को क्यों भगा रहे हो आप, स्नेक की तरह भगा रहे हो, कभी क्रैब वॉकिंग करा है, क्रोकोडाइल वॉक करा रहे हो. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर एबल टू एक्सप्लेन टू द पेरेंट्स कि हम क्यों कराते हैं, कि हम जो स्किल्स हम सिखाते हैं बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, सेम स्किल्स जो है, जो एनिमल वॉक की हम बात कर रहे थे, या रनिंग, जंपिंग, स्किपिंग जो भी बात कर रहे हैं, रनिंग बैकवर्ड करा के बच्चों को क्या मिलना है. अगर हम उनको सिखाएंगे कि अगर वो क्रिकेट जब खेलता है, अब वो पीछे अगर कैच उसको पकड़ना है तो पीछे ही भागना है, कभी उसको पीछे को देख के नहीं भागना है, अपने आप ही भागना है. एंड यू हैव टू कैच all the reflexes which are there. So काफी बार ये सवाल होता है कि जो बैट्समैन होते हैं, ओपनिंग बैट्समैन जो 2 होते हैं या 3 बैट्समैन होते हैं, वही लोग होते हैं जो स्लिप और गली में खड़े होते हैं. उसका लॉजिक क्या है? सिमिलर जो फास्ट बॉलर होते हैं वो बाउंड्री लाइन में होते हैं. उसका बड़ा सिंपल चीज है. जो फास्ट बॉलर होता है उसका आर्म स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, अपर आर्म स्ट्रेंथ. तो अगर बॉल वो फेंक सकता है तो वो थ्रो भी बड़ा अच्छा करता है. दूर से अगर ओवर आर्म थ्रो होता है, ओवर आर्म थ्रो जब वो करते हैं, बॉल को ऐसे करके फेंकता है फ्रॉम बाउंड्री लाइन, ही हैज अ बेटर स्ट्रेंथ, अपर आर्म स्ट्रेंथ, एंड तो वो दूर से फेंकता है. सिमिलरली जो ओपनिंग बैट्समैन होता है वो बॉल को अच्छी तरीके से देखता है, सो देयर हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इज बेटर देन एनीवन एल्स. तो स्लिप और गली में जो फील्डिंग करते हैं, जो बैटिंग का स्किल है कि बॉल को अच्छी तरीके से देख पा रहे, सेम स्किल चाहिए आपको स्लिप और गली पोजीशन में. सिमिलरली जो हम ये देख रहे हैं अपर ओवर आर्म थ्रो है, ओवर आर्म थ्रो का देखिए कितने सारे जगह पे काम में आ रहा है. क्रिकेट में काम में आ रहा है, बॉलिंग के लिए फास्ट बॉलिंग या स्पिन या जो भी कर रहे हैं. वॉलीबॉल में काम में आएगा, बैडमिंटन में है, you need that in netball, you need that in baseball, you need that in javelin, you need that in this in tennis also. सिमिलरली अगर हम थ्रो की बात करें और तो ये सारे स्किल जो ओवर आर्म थ्रो जो हम सिखा रहे हैं बचपन में, अगर इफ यू आर स्पेंडिंग 3 years in getting the ओवर आर्म थ्रो राइट, hitting the target, doing it exactly the right way, right angle. हम जब फोर्सेस ऑफ फिजिक्स की बात करते हैं, दैट इफ यू हैव टू थ्रो एट अ लॉन्गर डिस्टेंस, इट हैज टू बी एट 45 डिग्री. सो इट्स अ फैक्टर ऑफ योर हाइट, इट्स अ फैक्टर ऑफ द एफर्ट दैट यू आर डूइंग एंड कौन सी एंगल में आप फेंक रहे हो. अगर इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर, तो अब जब हम बड़े हो जाते हैं तो साइंस ऑफ स्पोर्ट्स जो हम बात करते हैं, साइंस ऑफ स्पोर्ट्स इज बेसिकली अबाउट दैट. जो भी हम स्किल्स कर रहे हैं हम उसको एनहांस कैसे कर सकते हैं. एंड सो द रिलेशनशिप ऑफ whatever I've learned as an overarm throw, very simple चीजें कर रहा हूँ, बॉल को फेंक रहा हूँ, एक टारगेट पे फेंक रहा हूँ, whether it is a cricket or whether it is volleyball, whether it is tennis. So धीरे धीरे करके उसके प्रोग्रेशन होता है. Similarly, हम two hand side arm strike हम करते हैं क्रिकेट में. अब किस में चाहिए, कि आपको गोल्फ में चाहिए, हॉकी में चाहिए, बेसबॉल में चाहिए, क्रिकेट में कोई भी शॉट करते हैं तो हर एक में वही चीज चाहिए, और कट्स होते हैं. तो ये सारी चीजें डिफरेंट स्पोर्ट्स में ये सारी चीज उसमें चाहिए. 2 हाथ में पकड़ के आपको करना है, 4 हैंड ड्राइव करना है, तो ये सारी चीजें आपको चाहिए. 2 हैंड साइड आर्म स्ट्राइक जो है हम बचपन में सीख रहे हैं सिंपल गेम्स, you need that for different sports. So sports specific skills is what get developed from rudimentary infant के जो reflexes होते हैं, reaction है. As an example, अगर मैं एक स्केल लेता हूँ,
You can try it at home also, and it's a reaction time test also कि मैं एक स्केल लेता हूँ, अगर मैं स्केल को एक पोजीशन से ड्रॉप करता हूँ तो कितना जल्दी मैं इसको पकड़ पा रहा हूँ. That is the reaction time test. तो मेरी reaction time test also shows my hand and eye coordination. तो ये मेरे क्रिकेट में चाहिए. बहुत सारी जगह पे रिएक्शन टाइम को अगर बजर को दबाना है, रूडिमेंट्री मूवमेंट स्किल्स जो है हमारे रनिंग, जंपिंग, हॉपिंग जो भी हम कर रहे हैं, फिर फंडामेंटल मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट कर रहे हैं, फाइन मोटर स्किल्स के कर रहे हैं. बच्चे जो क्ले के साथ भी खेलते हैं, छोटे छोटे, उसके साथ में एक पिक्चर चला गया, मैं आपको दिखाना भूल गया, क्ले के साथ भी खेलते हैं, तो हमारा फाइन मोटर स्किल्स और वो सारी चीजें डेवलप करते हैं. और ग्रॉस मोटर स्किल्स जब डेवलप होते हैं इनकी, और जो हम स्किल्स हम छोटे बच्चों के लिए कर रहे हैं, व्हेन दे ग्रो ओल्डर वी नीड टू बी एबल टू ट्रांसफॉर्म देम. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज है, कल डॉक्टर अजीत और डॉक्टर झांझरिया ने जब आपको बताया था कि 60 मिनट्स ऑफ प्ले एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे आजकल गेम बहुत घर पे खेलते हैं एंड वो दे आर वेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है. व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि जो आपके स्कूल का स्पेस है, बच्चों को कलर्स बहुत पसंद है, छोटे बच्चों को. सो व्हाट यू शुड डू कि आपके पास जितनी भी अवेलेबल स्पेस है आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए टू सिंपल प्ले एरियाज. व्हाई शुड यू प्ले स्नेक एंड लैडर ऑन अ टेबल? प्ले इट ऑन द ग्राउंड. आप उसमें कीजिए छोटा सा डाइस. मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, एक सेकंड दीजिए मेरे को. ये है, जैसे छोटे छोटे ये डाइस के तरह आप यूज कर सकते हैं. छोटे छोटे क्यूब्स आप बनाइए, स्कूल में बना सकते हैं, बच्चे ही बना सकते हैं. उसमें नंबर्स डाल दीजिए, उसमें जो भी डाइस में आएगा उसी से आप स्नेक एंड लैडर भी खेल सकते हैं. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है. सिमिलरली आप ये भी कर सकते हैं, ऑन द ग्राउंड यू कैन एक्चुअली हैव जंपिंग, हॉपिंग, ये सारे सर्किट बना सकते हैं. यू मेक इट लाइक अ स्नेक, आप उसमें कुछ भी बना सकते हैं एंड इस तरीके की सर्किट भी बना सकते हैं. और ये जो है आप देखेंगे इसमें इसका फुट इस तरफ है और ये फुट दूसरी तरफ है. तो आप ऐसे सर्किट बनाइए और इसमें पार्टनर गेम्स कर सकते हैं. जैसे गेम कॉल्ड मिरर मिरर. दो पर्सन एक दूसरे को सामने सामने फेस करते हैं. एक पर्सन मिरर है, दूसरा ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट जो भी करता है मिरर उसको रिफ्लेक्ट करेगा. तो ये आप सर्किट बना सकते हैं. बच्चों को बड़ा मजा आएगा इसको करने में, स्कूल में कर सकते हैं. सिमिलरली द नंबर्स 1 to 10 रोमन नंबर्स, सिंपल मैथमेटिक्स के जो है 1 into 2, 2 into 2, 3 into 2 मल्टीप्लिकेशन टेबल का आप स्टेयरकेस में कर सकते हैं. ये कुछ है. अभी we will also do some activity out here. So these are some of the. अभी कोविड-19 के टाइम में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो फिजिकल एजुकेशन टीचर का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. It is very important that we also do certain activity inside the classroom. Similarly, you can also teach the subject teachers. जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डॉक्टर किशोर ने भी बात किया होगा, उसमें फिजिकल एजुकेशन नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड विद सब्जेक्ट्स. मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इस तरीके के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. एज एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. हिंदी में एक पोएम है क्लास 6th and 7th में कॉल्ड कठपुतली. कठपुतली जो है, कठपुतली इज बेसिकली यू कैन प्ले दैट थिंग कठपुतली एज फ्रीज. सो यू प्ले म्यूजिक, चिल्ड्रन विल कीप डांसिंग, दे कैन स्टॉप, कठपुतली बन जाए. जो कठपुतली नहीं बने तो आउट हो जाए. सो यू कैन एक्चुअली हैव अ गेम कॉल्ड कठपुतली. देन देयर इज अ गेम कॉल्ड भगवान को डाकिए. भगवान को डाकिए गेम नहीं है, मतलब एक स्टोरी है जिसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल आता है और किसी को भगवान के पास जाना है, लेकिन गांव वाले जो है उसके ऊपर पत्थर मारते रहते हैं उसके ऊपर, और वो भगवान के पास जाने के लिए बहुत ऑब्स्टेकल्स है. क्या वो जो गेम है आप उसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि बच्चे वॉक करके जा रहे हैं, आप उसमें ऊपर आप उनके पर बाकी बच्चों को बीन बैग या तो पेपर के ये बना के जैसे रॉकेट वगैरह फेंकते हैं वो फेंकते रहे, एंड द चाइल्ड हैज टू गो फ्रॉम वन एंड टू द अदर. तो सिमिलरली साथिया हाथ बढ़ाना करके कोई पोएम है. साथिया हाथ बढ़ाने को चेन चेन करके गेम है, तब चेन चेन के थ्रू आप कर सकते हैं इसको. सिमिलरली देयर लॉट ऑफ क्लासरूम बेस्ड एक्टिविटी इंडोर. अगर बाई चांस बारिश हो गया, कोविड-19 को हटा देते हैं, कोविड-19 तो अभी थोड़े दिन में चला जाएगा, बट ये जो हम सीख रहे हैं राउंड द ईयर सीखने वाली बात है. बारिश हो गया, पीक समर हो गया, आपको मॉडिफिकेशन करना. जो भी बाहर आप कर रहे थे एक्टिविटी, क्या आप उसको अंदर कर सकते हैं और स्पॉट में कर सकते हैं. आप जैसे 20 into हाई नी की मार्चेस है, जॉगिंग ऑन द स्पॉट है, स्टेप अप्स है, वॉकिंग राउंड द डेस्क है, उसके डेस्क के चारों तरफ वॉक अराउंड करना है, जंपिंग अपवर्ड्स, ऊपर जंप करना है, नीचे झुकना है. तो ये सारे एक्टिविटीज आप इंडोर सर्किट में आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए,
या तो जो भी अवेलेबल स्पेस है, कॉरिडोर्स है, स्टेयरकेसेस है, कहीं भी हो सकता है। क्लासरूम या तो मल्टीपर्पज हॉल में आप जैसे मिरर मिरर वाला गेम है, आप कोई भी चीज को मिरर मिरर कर सकते हैं। दो दो पर्सन से, वन इज अ मिरर, द अदर वन इज ऑब्जेक्ट। द मिरर हैज टू, ऑब्जेक्ट विल डू, अ मिरर हैज टू रिफ्लेक्ट दैट, and you can keep changing. You can say mirror mirror जो एक down हुआ तो you can actually keep changing that. Moving with music, restricted movement on the spot, marching, jogging, one step, one step side to एक step forward, एक step आगे और पीछे. I can go up, I can walk back, I can do toe tapping like this, I can do twisting, I can do complete 360-degree turns also. ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ हाथ के वेरिएशन के साथ। हाथ को ऊपर करके कर सकता हूँ, हाथ को नीचे करके कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। तो जो भी मैं करना चाहता हूँ ये सारी चीज कर सकता हूँ मैं। We can do aerobics, folk dancing, square dance. एक पेपर डांस जो होता है सारे कपल्स वगैरह खेलते हैं काफी ये करके, पेपर डांस। So can you do paper dance की variations? Stretching, relaxation exercises है। डेस्क के ऊपर काफी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। डेस्क योगा बड़ा पॉपुलर है, सारी चीजें आप कर सकते हैं। You can actually use the entire classroom as a prop. डेस्क हो गया, चेयर हो गया, स्ट्रेचेस हो गए, उसके जो विंडोज है पार्टनर्स के साथ कर सकते हैं। सो लेट अस डू वन थिंग। अभी हम मैं स्क्रीन को थोड़ा अनशेयर करता हूँ। डॉक्टर झांझरिया जी and me, we will try and do some exercises. So let's take a little break. Abhi almost 1 घंटा हो गया, so we'll take a little break and then we'll 5 minutes of activities, so we can all do that together. Okay, so yes, definitely one hour हो गया है और हम थोड़ा सा बॉडी हमारी रिजिड हो गई होगी, तो वी नीड थोड़ा सा हमें फिजिकल जर्क की जरूरत है और क्लासरूम में भी हमें एक थोड़ा एक्टिविटी करवाना चाहिए। सो वी कैन स्टार्ट विद मूविंग आवर नेक्स व्हाइल सिटिंग ऑन द चेयर। आप कुछ चेयर पे भी, ये सारे पार्टिसिपेंट्स ऑल ऑफ अस कैन एक्चुअली डू इट टुगेदर। हाँ प्लीज, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी प्लीज डू, So इंक्लूडिंग there's द a पैनलिस्ट। there's a small game called Simon Says. So Jhanjariya ji is our Simon. So he is a Simon. Simon is saying. So whatever Simon is saying, all of us students, so let us all do that together. Okay, yes, start your neck bending forward and backward. Okay, sideward, sideward. Okay, rotate your shoulders little bit. Okay, you can extend your arms and rotate shoulders backwards. Okay, you can make some twist, twist your upper body, twist. You can stand up from your chair. Toe tapping can do. We can do jumping jacks. We can do clapping. Okay, आवाज नहीं आ रही है। Okay, so Simon said, jump high. Everybody jump high. So everyone can take a little break. Jump and twist. Okay, now for the smaller kids, walk like a monster. Walk like a monster. Bring your monster outside. Okay, now stretch like an ape. Stretch your body like an ape. Okay. Next, run on one place. Start running on the spot. Okay, now twist. Take your arms to right, left, like. Take a roll.
take a roll. Forward bending, backward bending, forward bending, up, forward bending, up, backward bend, up, backward bend, up. Go for half backward roll, half backward roll, not full roll. Full roll is not advisable. Half backward roll, then half front rolls. You can play with your hands, play with your hands. Fill your lips. Simon says. Now you all are tired. Do a little bit deep breathing. Now, last exercise. Now you are tired. Take a bottle and drink some water. I hope now you are satisfied. Clap yourself. And again, Yes, come back to the class. Thank you so much. I think it was yeah. So this game, so the game that Janjali ji was actually playing is called Simon Says. So ये सारी चीजें ये Simon, you can actually say Simon says, and you can say jump high. So all the children starts jumping. You say Simon says walk like a monster. Simon says scratch like an ape. You twill. You walk like a duck. Be a shark. अब कोई भी animal के expression जो है ना, expression बड़ा important. Lion, dog. So all children. Simon says meow. So you say meow. So all of them will start with your hand. You can say howl like a wolf, roar like a lion. So वो सारे बच्चे stretch करेंगे. So what you can do is that you can actually have this game called Simon Says, and you do any activity. हम इसमें वेरिएशन ला सकते हैं कि मैं जो भी बोलूंगा उसको उल्टा करना है आपको. Jump high, jump up मतलब you have to jump down. When you say jump side, go to the left मतलब आपको right जाना है. So dodging वगैरह वो सारी चीजें आप कर सकते हैं इसमें. So you can actually improvise. You can do your own activities. And जैसे ये बताया आप circuits बनाइए, कुछ games करिए, and you can keep doing that. Yeah. So, as we have talked before also, that WHO has recommended 60 minutes of physical activity for every child. So we have to ensure that 50-minute activity. But sometimes the school is not providing you that much of time. Suppose you have one period that is for 30 and 40 minutes, but 60 minutes is required. So how to get those extra 30 or 20 or 30 minutes? For that, we can do some modifications or some arrangements like active assembly. Like twice a week, you can ask your authorities to do some active assembly. You can do some yoga practices on one day, or you can do some aerobic exercises, or some other little bit of physical jerk can be given in the असेंबली पीरियड, जिसके अंदर बच्चे भी इन्वॉल्व हों, टीचर भी इन्वॉल्व हों, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सारा आपका स्टाफ वो हो, सब मिलके थोड़ा सा कुछ म्यूजिक के ऊपर कुछ करें, तो वो एक फन भी होगा, एंजॉयमेंट भी होगा, और सबको एक वैरायटी भी मिलेगी. तो एक्टिव असेंबली इज वन. देन स्ट्रक्चर्ड पीई प्रोग्राम. अगर हम अभी जैसे हमारे जो बहुत से मैक्सिमम स्कूलों में ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम नहीं है. हमने उनको कहा कि आप फुटबॉल खेल लीजिए, या आप बास्केटबॉल खेल लीजिए, या ये बॉल दे दिया आपने, क्रिकेट खेलो, कुछ भी. बट लेकिन अगर स्ट्रक्चर्ड हो, हर फिजिकल एजुकेशन पीरियड का अगर कोई एम एंड ऑब्जेक्टिव हम सेट करें कि इसमें हमें ये अचीव करना है, तभी हम अब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, जिसके अंदर फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को एक कोर सब्जेक्ट की वैल्यू देने के लिए कहा है, तो अगर हम अपने पीई प्रोग्राम को स्ट्रक्चर्ड करेंगे, जैसे बाकी क्लासेस में मैथमेटिक्स साइंस में स्ट्रक्चर्ड है कि आज की क्लास में हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, या आज की क्लास के बारे में हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ऐसे ही हर पीई क्लास, पीई पीरियड आपका स्ट्रक्चर्ड हो कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और इसके क्या लर्निंग आउटकम है. तो हमें हमारे पीई प्रोग्राम को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड, थोड़ा लेसन प्लानिंग उसकी करनी पड़ेगी. फिर हमारे स्कूल में जो भी रिसेस होती है, हाफ टाइम जो होता है, जिस लंच पीरियड होता है,
तो बच्चे नॉर्मली 10-15 मिनट में खाना खा लेते हैं, लेकिन हमारा 40-45 मिनट्स का अप्रॉक्सीमेटली होता है हाफ पीरियड, तो उसको हम कुछ यूटिलाइज कर सकते हैं। उसको उसके अंदर हम कुछ एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं जिससे हमारा 60 मिनट का टारगेट अचीव हो। फिर है सेंसरी पाथ, जो आपके पाथवेज हैं, कॉरिडोर्स हैं, उनके ऊपर आप कुछ मार्किंग कर सकते हैं, कुछ स्नेक्स की तरह वॉक कर सकते हैं, कुछ बॉक्सेस बना सकते हैं, कुछ आप जो स्टेयर केसेस हैं उसके ऊपर कुछ मल्टीप्लिकेशन, कुछ डिवीजन के कुछ आप ऐसे मार्किंग कर सकते हैं जो बच्चे उनमें इन्वॉल्व होके और ऑटोमेटिकली दे विल डू सम फिजिकल एक्टिविटी। फिर अगर फिर भी आपका नहीं सेटिस्फाई होता है 60 मिनट, तो आफ्टर स्कूल और बिफोर स्कूल भी आप कुछ एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। यू कैन ऑर्गेनाइज सम कोचिंग प्रोग्राम और रिक्रिएशन प्रोग्राम बिफोर और आफ्टर द स्कूल, सो दैट चाइल्ड इज इन्वॉल्व। फिर आप मूव एट होम असाइनमेंट भी दे सकते हैं। आप घर के लिए भी कुछ उनको, जैसे बाकी सब्जेक्ट में असाइनमेंट्स दे सकते हैं, देते हैं, वैसे आप उसको घर के लिए भी कुछ एक्टिविटीज सजेस्ट कर सकते हैं, सो दैट चिल्ड्रन इज डूइंग एट होम। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे भी कि मूव एट होम हम कैसे करते हैं। तो वो एक्टिविटीज को मूव एट होम की एक्टिविटीज को दिखाएंगे। तो जंजरिया जी का जो कहना है मोटा मोटा है कि अगर 60 मिनट्स ऑफ प्ले कराना है, एक हमें पी पीरियड मिलता है, तो कल भी आपने देखा होगा कि 30 मिनट्स हम फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी करें, अब बाकी 30 मिनट्स को हम कभी एक्टिव असेंबली में करें, तो कभी रिसेस पीरियड में करें, कभी सब्स्टिट्यूशन पीरियड में करें, और तो हर बच्चे को फिर वो 1 घंटा जो है उसमें उसमें मिल जाएगा। प्लस उसको कुछ एक्टिविटीज हम घर में भी देते हैं। मूव एट होम इसलिए क्योंकि मूवमेंट हम घर में इंश्योर कर सकते हैं, स्पोर्ट्स खेले ना करें, मूवमेंट तो कर सकते हैं हम जरूर। सो अभी इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हमें 40 मिनट्स मिलता है पी पीरियड, हम उसको कैसे किस तरीके से करें कि वो बड़ा इफेक्टिव बने 60 मिनट्स को। और दूसरा, हमारे पास बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि हाउ डू यू प्लान कैलेंडर ऑफ एंटायर ईयर। So today we are going to discuss about how do you design and plan physical activity classes and sports events for the entire year, and how do you, what are the age appropriate resources and learning specific requirements that we can do, किस तरीके के रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ वार्म अप एंड कूल डाउन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले वार्म अप, फिर एक्टिविटी, फिर कूल डाउन, एंड लीड अप गेम्स कैसे कर सकते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं गेम्स, और स्मॉल एरिया गेम्स कैसे हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है प्लानिंग इज द की। सो इफ यू लुक एट दिस बोर्ड, दिस स्कूल बोर्ड हैज कंपटीशन, क्लब एंड फन वीक्स, इट हैज हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल, इट हैज स्कूल गेम्स क्रू, इट आल्सो हैज करिकुलम। सो ये एक बैलेंस्ड प्रोग्राम है स्कूल का। अगर ये स्पोर्ट्स का बोर्ड है तो इसमें कंपटीशन का भी कोई इम्पोर्टेंस है, हेल्दी लाइफस्टाइल का इम्पोर्टेंस है, स्कूल गेम्स का इम्पोर्टेंस है, एंड करिकुलम का इम्पोर्टेंस। सो वी नीड टू एक्चुअली प्लान इन सर्टेन वे सो दैट एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। Then it also has cross country, which means that there are activities that you can do with our team. So smart goal क्या होता है? Jhanjariya ji, if you could say, what is it? What is a smart goal? Look, this is very important. Whatever we are doing, it should be very specific and very target oriented. Means you are seeing in this picture, all three athletes are jumping. One is a high school athlete, another is a college star, and another you are seeing a Olympic champion. So for every athlete there is a specific goal. So what this picture is saying, as per the level of the child, you choose a specific goal. It should be measurable, achievable. You cannot set a goal for a high school student that you have to run in 10.5 seconds, the 100 meter in 10.5 seconds. It may not be possible. So the goal should be very, very specific, measurable, and achievable. He should be able to achieve that. Otherwise he get demotivated. उसका मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा। उसको लगेगा मेरे को इतना ऊंचा पहाड़ चढ़ना है, पहाड़ जैसा आप उसके लिए बना देंगे, तो आपको ग्रेजुअली इट शुड बी इन प्रोग्रेशन, दैट शुड बी रियलिस्टिक, दैट शुड बी अचीवेबल। और एक जो भी आप अपना उद्देश्य बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, दैट शुड बी टाइम बाउंड। ऐसा नहीं कि आपने कहा कि आपको ये पर्टिकुलर चीज को करना है, तो आप उसको आप असेसमेंट कीजिए कि बच्चे का लेवल देख के इस लेवल में आप ये 2 महीने में, 1 महीने में कब तक वो अचीव कर सकता है। तो एक उससे टाइम बाउंड गोल आपको सेट करना है। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, उसके अंदर बच्चे का खुद से इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उसका खुद का कमिटमेंट होना चाहिए उसके लिए। ठीक है। फिर हम
जो क्वालिटी पी प्रोग्राम, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए वो हमें देखने की जरूरत है। एक हमने बात की, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, बच्चे का साइकोलॉजिकल, उसका मेंटल, उसका इमोशनल, सारे लेवल को देख के आपको उसको सेट करना चाहिए। फिर आपके पास एज अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स होना बहुत जरूरी है, रिसोर्सेज, चाहे वो फैसिलिटीज हो चाहे इक्विपमेंट्स हो। वो आप एक 7 नंबर की साइज आप एक प्राइमरी क्लास के बच्चे के लिए बास्केटबॉल यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए साइज 6, साइज 3 या साइज 5 अप्रोप्रिएट होगी। फिर इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी चाइल्ड इज इम्पॉर्टेंट, इसको भी हमें ध्यान रखना है कि सभी बच्चे इन्वॉल्व हों। जैसे हमारे फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि हमारे डीजी सर ने कहा था कि हमें आखिरी के 5 बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कहीं वो छूट तो नहीं रहे हैं। ठीक है, फिर प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस, हर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मिलनी चाहिए, चॉइस मिलनी चाहिए। क्लास की साइज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि दैट शुड बी स्टूडेंट टीचर रेशियो को हम थोड़ा सा मॉनिटर करना चाहिए, क्वालिटी टाइम उसके अंदर हो, और बच्चे के पास कुछ इंसेंटिव हो, कुछ मोटिवेशन हो, वो अपने पर्सनल बेस्ट देने की कोशिश करे, ना कि विनिंग की। हमें विनिंग, इस लेवल पे विनिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट उसके लास्ट की परफॉर्मेंस क्या थी वो उससे बेहतर करने की कोशिश करे, क्योंकि एक क्लास में बच्चों का लेवल अलग होता है। एक अगर आपको 100 मीटर स्प्रिंट करना है तो एक बच्चा बहुत तेज भागता है और एक है जो स्लो स्लो भागता है, तो वो तेज वाले से जो फास्ट रनर है उससे अभी कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, तो उससे अगर कॉम्पीट करवाओगे तो he will feel demotivated. So instead of competing with the that child, he should compete with his personal best. That is required. Then the last important thing is your program should have the feedback from the parents, from the students, from the teacher, and after that proper instruction and follow-up should be taken up. Next. Yeah. Yeah, so we have talked about the age appropriate activities. So basically you are seeing for the kids, we are talking from nursery to 5, the age is very vulnerable, so the more focus should be on the neuromuscular coordination, because this is the age in which their maximum, it is said that 85 to 90% of neuromuscular coordination takes place between your age 6 to 11 or 12. So this is very important in this, हम इस स्टेज में हमें उनके फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स के साथ, उसके साथ साथ में हमें उसके जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है उसके ऊपर ध्यान हमें देना चाहिए। ठीक है, सो इस क्लास में हम सिर्फ, क्योंकि हम क्लास नर्सरी टू 5 के बारे में बात कर रहे हैं, फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो अदर गेम्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं, टीम स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, और न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन एक ऐसी चीज़ है जो क्लास 1, 2 और क्लास 12 तक आपके न्यूट्रिशन को, उनकी डाइट को आपको उसमें ध्यान रखने की जरूरत है। राइट, थैंक यू सो मच। तो एक हम ये बात करें, एक साल में जो है हमारे पास 52 वीक्स होते हैं। सो दिस आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट प्लानिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन सेशंस। आप किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, और बड़े सारे प्रॉब्लम्स। आई एम गोइंग टू गिव यू अबाउट 3 और 4 एग्जांपल्स कि अगर आपके पास टीचर्स है, टीचर्स नहीं है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कर रहा हूँ कि आप जो पूरे 52 वीक्स मिलता है तो उसमें से 12 वीक को आप हटा दीजिए। तो हमारे पास मोटा मोटा बचता है 40 वीक्स, तो हमें मिलता ही मिलता है। एवरी स्कूल गेट्स 40 वीक्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्लासेस। 40 वीक्स को यू डिवाइड देम इन टर्म 1, 2, 3 एंड 4, एंड उसको 10 वीक्स में, आप एक टर्म को 10 वीक्स में डिवाइड कर लीजिए। सो यू गेट 10 वीक्स फॉर वन टर्म एंड यू डिवाइड इनटू 4 डिफरेंट टर्म्स, तो आपका ये 40 वीक्स हो गया। सो दैट वे यू गेट 40 वीक्स। Now what you do is that if all the children are working at the same activity under the same teacher, तो एक टीचर है स्कूल में, एक टीचर है जिसके पास बच्चे हैं, तो आप वो टीचर किस तरीके से क्लासेस ले सकता है, I'm going to talk about it. So what you do is that this is an example where week 1 he is teaching water activities, partner activities, relays, skipping, ball and hoop. So he is saying that for the next 10 weeks, these are the 5 mota categories that I'm going to work on. Once this term is over, when I take my children to term 2, I will introduce them to move to adventure, movement, circuit, challenge, music games. Then orienteering मतलब स्कूल के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज होती है, गार्डनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया,
आप सोशली गॉसिप कर करके जाते हो, फिर आप कुछ नेचर ट्रेल कर रहे हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो उसके अंदर। बॉल एंड रनिंग, डांस, स्किपिंग, वॉकिंग। टर्म 4 जब आ जाएगा उस साल का, तो मैं उनको रिले कराऊंगा, फिर सर्किट कराऊंगा, फिर गेम्स कराऊंगा, मूव टू वाटर कराऊंगा एंड म्यूजिक एक्टिविटीज कराऊंगा। सो ए पी टीचर अगर पूरे साल एक क्लास के लिए प्लान करता है, सो दिस इज हाउ ही विल प्लान दैट आई हैव 40 वीक्स, divide them into term 1, term 2, term 3 and term 4, and each term divided into five sets of 2 weeks, week 1 and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, 10. So that way what will happen is, and then what he needs to do is to look at two different things. Strategic play in invasion games, मतलब balls and hoops के through. Secondly, वो भी सिखा रहा है कि मैं social skills और skills through cultural dance भी सिखा रहा हूँ. So there are different aspects that you are teaching. One is on skills, the other one is on the values that you are teaching. So this is one way that if I am one teacher and same set of children come, I can for the entire year, this is how I can plan. 40 weeks divide into 4 terms and हर 10 weeks का 10 weeks को मैं 2 week में divide करूँगा, इस तरीके की मैं एक्टिविटी करूँगा, बड़ा सिंपल है, तो मैं कंफ्यूज नहीं होगा फिर। दूसरा एग्जांपल है कि week 1 and week 2 में week 1 and 2 तो ब्रॉड हमने डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास week 1 and 2 में बच्चे आएंगे, ज्यादा बच्चे आएंगे, कम बच्चे आएंगे, तो मैं उनको कैसे करा सकता हूँ? Individual class is divided into 2 groups with a daily or weekly rotation. हम उसको क्या करें, वीक 1 में ग्रुप 1 को एक टीचर आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर हमारे पास टीचर कम है तो मैं क्या करूंगा, ग्रुप 1 को मैं कहूंगा कि वॉकिंग और रनिंग करना है, वो इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। और मेरे को म्यूजिक के साथ उनको सर्किट कराना, तो मैं टीचर के थ्रू कराऊंगा। सो आई एम वन टीचर बट आई डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। एक ग्रुप को मैं हैंडल कर रहा हूँ, दूसरे ग्रुप को मैं कह रहा हूँ कि आप उसको रनिंग करो, ये करना है आपको 100 मीटर करके, आप 100 मीटर करना है या 400 मीटर आपको भाग के आना है। So running and walking I do for group 1. In the next week I change it, I switch it. दूसरा एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल is 2 classes come together. एक टीचर के पास आ गए with one teacher supervising each activity. 2 टीचर्स हैं, दो क्लासेस एक साथ आ गए, तो मैं कैसे कराऊंगा? मैं उसको सेम करूंगा, स्विच करूंगा, क्योंकि 2 टीचर है मेरे पास। सिंगल टीचर होता तो मैं कुछ इंडिपेंडेंट एक्टिविटी करता, बट नाउ आई कैन डू बॉल गेम्स फॉर वन ग्रुप एंड hoop गेम्स फॉर द अदर वन, टीचर ए एंड टीचर बी। दिस इज थर्ड एग्जांपल। फिर क्या हो गया, सेवरल क्लासेस एक साथ आ गए, बहुत सारे क्लासेस एक साथ आ गए, बहुत केओस है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको, तो मेरे को उसको डेली रोटेशन करूंगा। 3-4 सेक्शंस आ गए मेरे साथ, तो वीक 1 में क्या करूंगा, मंडे के दिन ग्रुप ABCD को करूंगा, A B C and D, 4 सेक्शंस आ गए, एक सर्किट, एक म्यूजिक, एक गेम्स और एक बॉल एंड हुक की क्लास। टीचर्स अलग अलग हो सकते हैं, फिर उनको मैं स्विच कर लूंगा। एंड ऑन फ्राइडे आई कैन टेल चिल्ड्रन कि आपको जो मन करे आप जाके उस सर्किट में चले जाओ, 4 टीचर से आप 4 जिस ग्रुप में जाना है आप चले जाओ, सो दैट वे यू आल्सो गेट अ फीडबैक ऑन द टीचर का क्वालिटी क्या है। फिफ्थ एग्जांपल है, इंडिविजुअल क्लास और ग्रुप्स ऑफ क्लासेस आ रहे हैं, ईच डे ऑफ द वीक हैज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज। हर वीक में एक सेट ऑफ एक्टिविटीज हमने रखा है। हम क्या करेंगे, क्लास 1 to week 1 to 5 we will do certain activity, week 6 to 10 we'll do another set of activities. तो मेरे वो जो 10 एक्टिविटी हमने किया हुआ था, हमने किया था वो आज इट इज कर रहे हैं, 2-2 सेट्स में कर रहे हैं, बट वी डिवाइड देम लाइक दिस। तो ये मोटा अगर आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना है, मोटा स्कूल को आप 40 वीक्स सोचिए, 40 वीक्स को 4 टर्म सोच लीजिए, एक टर्म में यू ब्रेक डाउन इनटू 2 वीक्स ऑफ एक्टिविटीज। So this is what I wanted to say. Yanjali ji, how do you make an annual plan for this thing? So, as you said that we have 40 weeks in our hand, and in those 40 weeks should be planned in an effective way so that our program goes very effectively. So, we need to customize our program by seeing the available resources, कि हमारे पास क्या क्या facilities available हैं, हमारे पास grounds कितने हैं, और क्या हमारे पास ज़्यादा रेनी सीजन ज़्यादा है या हम सनी सीजन में है, किस कंडीशंस में, वेदर कंडीशंस में है। और जब भी हम हमारा एनुअल प्लान बनाएं तो वी शुड मैच इट विद द NCERT और CBSE करिकुलम, की उनके जो भी प्रोग्राम है वो हमारे एनुअल प्रोग्राम से मैच करें, या फिर आपका जो लोकल कैलेंडर है, आपके एरिया में जो लोकल गेम्स होते हैं या लोकल प्रोग्राम्स होते हैं,
उनको ध्यान में रख के आप अपने एनुअल प्रोग्राम बनाइए और उसके अंदर आपको जैसे आप लोकोमोटर स्किल्स हैं बच्चों के लिए और उसका क्या आउटकम है, हर क्लास के अंदर क्या आउटकम उसका होना चाहिए, उसको आपको ध्यान में रखना है। बॉडी मैनेजमेंट स्किल्स उसके अंदर इंट्रोड्यूस करिए। तो आप अपने राइट साइड में देख रहे हैं कि एक्टिविटीज लिखी हुई हैं और एक्टिविटीज के बाद में उस एक्टिविटी को करने से क्या आउटकम मतलब आपको मिल रहा है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उससे outcome is आप important. Outcome is आउटकम more इज important. इम्पोर्टेंट। Yeah, that's true. So we can यस just यस probably यस go यस to the next one. This is just a thing. So broadly अगर हम इसको देखते हैं तो हम जैसे KG to 1 देखते हैं या 5 to 6 का देखते हैं, क्लास का देखते हैं। So मोटा मोटा अगर हम देखते हैं तो हमने so we talked about 2 weeks. तो सिमिलरली अगर हम इसको प्रोग्रेसिवली देखें, so when we are progressing, so this is an example कि bean bag balancing is a progression. So हम हर वीक को आप 2 एक्टिविटीज में डिवाइड कीजिए। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ FITT में फ्रीक्वेंसी एक है, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी, राइट? The frequency. So let us say that you get 2 classes in a week. So you do one activity on walking on music, the other one is jumping on music, right? And उसका फिर मेन एक्टिविटी करके फिर बीट बैक का एक्सप्लोरेशन। But if you get 4 days in a week, so you do 2 days of one activity and 2 days of the other activity. If you get 5 days, you do both the things, and then you combine on the 5th day both the activities. So what is important is that हमने देखा था कि वीकली को हमने 4 टर्म और 2-2 हफ्ते में किया। अब हम हर हफ्ते को 2-2 एक्टिविटीज में हमने डिवाइड किया, so that जो हमारा प्रोग्रेशन है, हम जो भी चीज सिखा रहे हैं उसको हम छोटे-छोटे यूनिट में हम ये कर पा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, सरोज यादव मैम ने बैच 1 में बोला था, ये एक्टिविटीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आपको जो सिखा रहे हैं कि हम होना चाहिए, आप भी फुटबॉल सिखा रहे हैं। सो सिमिलरली इट इज बेसिकली वो 3 कोन का ड्रिल है, 3 कोन स्प्रिंट ड्रिल हो गया, पासिंग और रिसीविंग, ड्रिबलिंग कंडीशंस कर रहे हैं, पासिंग और टर्निंग है, पासिंग द बॉल है, शूटिंग, डिफेंडिंग। हम स्किल्स को जो हम मल्टीपल वीक्स में डेवलप कर रहे हैं, सो दिस इज प्रोग्रेशन टू दैट, एंड एवरी सेशन नीड्स टू हैव अ वार्म अप, इट नीड्स टू हैव अ ड्रिल, it has a main this thing, and finally a cool down. So Sujit ji, we have very less time to finish, and one more slides are left, so we go a little bit fast. So quantable so and measurable, fitness goals should be there, and you are seeing that health related fitness and skill related fitness components should be incorporated. And we have the fitness Khelo India fitness test for school going children. On top you are seeing 5 to 8 years. This can be used for the primary kids, and it is being used class up to 3. It is being used. The BMI is a very simple method you can use. Then static balance with Flamingo balance test, and coordination test with plate tap test. Next. Yeah. And now it is very important that every session should begin with a warm up and end with a cooling down. So यहाँ पे हमने एक 40 मिनट्स का सेशन प्लान किया है, कैसे आपको उसको प्लान कर सकते हैं। शुरू में जब बच्चा आता है तो 3 से 5 मिनट आपको उसे वार्म अप दीजिए, उसमें आप वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, इसमें आप सारे वेरिएशन डाल सकते हैं, फॉरवर्ड वॉक, बैकवर्ड वॉक, साइडवर्ड वॉक, ट्विस्टिंग वॉक, लाइकवाइज। और फिर इसमें जब वॉकिंग, रनिंग और जंपिंग आपका हो जाता है तो उसके बाद में आप थोड़ा सा स्टैटिक और डायनेमिक स्ट्रेचेज उसके अंदर दे सकते हैं 1 से 2 मिनट, और 1 to 2 मिनट आप उसमें स्क्वाट, ट्विस्ट, जंप, स्प्रिंट्स, एजिलिटी रन्स ये इन्वॉल्व कीजिए। और इसके बाद में जैसे आपके पास अगर 40 बच्चों की क्लास है तो यू कैन डिवाइड देम इनटू फ्यू ग्रुप्स. This is an example. You can take your own areas. Like group 1 can go for kabaddi, group 2 can go for football, group B is doing circuit training, and group 2 is practicing catching and throwing in cricket. So this is how you can organize a class. And when this, so you are getting a 30-minute activity जिसके अंदर 5 मिनट का वार्म अप और 5 मिनट का कूलिंग डाउन. फिर आप लिमरिंग डाउन, जो कूलिंग डाउन प्रोसेस है 5 मिनट के लिए, 2 to 3 मिनट स्ट्रेचेज आप नेक की, शोल्डर की, आर्म, ट्रंक और लेग्स की स्ट्रेचेज कर सकते हैं स्टैटिक. और उसके बाद आप शेकिंग ऑफ योर आर्म्स, शेकिंग योर थाइज, शेकिंग योर बटक्स, लाइकवाइज ये आप शेकिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हैं.
और लास्ट में आप 1 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग है या मेडिटेशन है, लाफिंग है, सो दैट आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए। इस तरह से आप अपना एक सेशन प्लान कर सकते हैं, तो इट वुड बी मोर इफेक्टिव। Thank you so much. I think so broadly आपने ये जो बताया, so we started from annual plan going up to a single session also which had warm up, some activities and then a cool down. So broadly आपको 30 minutes of active play है और 10 minutes of warm up और cool down है, so जिसमें fitness की activities आ गई हैं. So now सबसे बड़ा problem होता है schools में on there's something called STEP, space, time, equipment and people. These are the 4 main constants in any school. किसी का space constant होता है, किसी का time constant होता है, किसी का equipment है तो कोई people है. So how do you innovate? How do you innovate is basically using small area games. छोटे-छोटे बड़ा important है कि instead of cricket का आपको वो बड़े ground की जरूरत नहीं है. क्रिकेट इसलिए पॉपुलर है because of गली क्रिकेट. फुटबॉल भी इसलिए पॉपुलर है क्योंकि आप बहुत छोटे स्पेस में फुटबॉल खेल सकते हैं. तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. So we are going to look at a few examples कि आप बड़े-बड़े ग्राउंड्स को छोटा कैसे करके छोटे-छोटे मल्टीपल गेम्स का ये कैसे बना सकते हैं. Important is to engage all children and जितना भी आपका अवेलेबल इक्विपमेंट है आप सबको यूज करना है. और सब्जेक्ट टीचर्स को भी आप प्लीज उनके वो भी यूज कीजिए ताकि आप उनके सब्स्टिट्यूशन पीरियड को अच्छी तरीके से बना सकते हैं. सिमिलरली आपका पीरियड भी वो ले सकते हैं. अदर टीचर्स शुड बी एबल टू टेक योर सब्स्टिट्यूशन पीरियड्स आल्सो. तो ये एक एग्जांपल है स्पेस एंड दिस थिंग. आई एम गिविंग 2 एग्जांपल्स कि इसमें स्पेस बहुत ज्यादा है. Space is not a constant here. छोटे-छोटे उसपे 2 पैराशूट से बच्चे कर रहे हैं. स्पेस की कोई कांस्टेंट नहीं. यहाँ पे स्पेस की कांस्टेंट है तो एक हमने बड़ा सा पैराशूट ले लिया और सारे बच्चों को एक साथ कर दिया. It's the same activity. This is an example where free classes versus structured class. ये देखिए फ्री पीरियड में सिंपल उनके लिए प्रॉप्स लगा दिए. बच्चे अपने आप झूले लगे हैं, टायर्स है, डॉग्स है, बच्चे अपने आप और यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर्ड है. एक्टिव असेंबली है. इसी के टाइम में वो नहीं स्ट्रक्चर्ड है. नहीं डोंट स्टॉप टॉकिंग यार. ये आपको ये एग्जांपल्स हैं. मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बड़े-बड़े ग्राउंड्स आपको जरूरत नहीं है. आपको चाहिए छोटे-छोटे स्पेस. देखो छोटे अगर छोटा स्पेस होगा तो ज्यादा नंबर टचेस एंड पासेस होंगे फुटबॉल में. बच्चों को मजा आएगा क्योंकि उनके पास बॉल आएगा, वो किक कर रहे हैं, कोई उनके पास आ रहा है, बच्चे भाग रहे हैं, तो बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे. बड़े वाले ग्राउंड में ऐसे खड़े रहेंगे, बॉल उनके पास कभी आएगा नहीं, थक ही जाएंगे खेलने से पहले. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ब्रेक डाउन लार्ज ग्राउंड टू वेरी स्मॉल एरियाज. एक फुटबॉल ग्राउंड में आप हैंडबॉल, फुटबॉल, हॉकी तीनों चीज करा सकते हैं. और उसके जो साइड्स है आप उसमें लॉन्ग जंप की पिट बना दीजिए और उसमें 50 मीटर का ट्रैक के तरह स्पेस बना दीजिए. सो यू विल हैव एथलेटिक ग्राउंड, यू विल हैव अ फुटबॉल ग्राउंड, यू विल हैव अ हॉकी ग्राउंड, यू विल हैव अ हैंडबॉल के लिए खेल सकते हैं. और साइड में जो स्पेस है आप उसको वॉलीबॉल की तरह कर सकते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो सिंगल एक्टिविटी सिंगल स्टेशन, सिंगल एक्टिविटी मल्टीपल स्टेशन. So single activity multiple station का मतलब है कि फुटबॉल ग्राउंड को if you break it into 4 parts, so you can have 4 areas where children can play. एक rectangle को 4 पार्ट में डिवाइड किया, एक horizontally ये multiple activity single station. So एक सिंगल जगह पे मल्टीपल एक्टिविटीज कर सकते हैं. जैसे सर्किट के बारे में हमने देखा, so मल्टीपल एक्टिविटीज है सिंगल जगह पे और मल्टीपल एक्टिविटीज मल्टीपल स्टेशंस. So ब्रेक कर दिए हैं, सब अलग अलग जगह पे. So this is an example, multiple activities, multiple stations. So you can actually find out all the unutilized spaces. आप उसमें अलग-अलग एक्टिविटीज कीजिए. कहीं पे स्नेक रन कीजिए, कहीं पे क्रोकोडाइल है, कहीं पे डॉग एंड द बोन का गेम कीजिए आप. कहीं पे वॉलीबॉल हो रहा है, कहीं पे गेम हो रहा है, तो कहीं रिक्रिएशनल गेम है, तो कहीं पे फिटनेस एक्टिविटीज है, तो कहीं पे ये आप उसको ब्रेक कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल बताया, पूरे एथलेटिक एक फुटबॉल ग्राउंड को आप ब्रेक कर सकते हैं इनटू लेट्स से 4 एरियाज, जिसमें 2 फुटबॉल के लिए, एक हैंडबॉल के लिए, एक रग्बी के लिए आपने कर लिया और एक कबड्डी आप स्पेस बना लिए, कबड्डी के लिए, वॉलीबॉल के लिए, 50 मीटर ट्रैक के लिए, लॉन्ग जंप पिट के लिए. So you can actually do that. Similarly here again similar example, multiple activities, multiple stations. आप अलग-अलग जगह पे अलग-अलग जगह एक्टिविटीज कर सकते हैं. This is an example जहाँ पे ये कर रहे हैं, जहाँ पे आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है. You should be able to utilize the equipment.
जैसे आपके पास बॉल नहीं है तो नॉर्मल पेपर और टेप से आप बॉल बना सकते हैं। आप किसी को बॉलिंग सिखाना है, घर के अंदर बॉलिंग करना है, तो बॉटल से भी आप कर सकते हैं, मार्कर्स की तरह यूज कर सकते हैं इसको। आप जंपिंग की बहुत सारे एक्टिविटीज ऐसे कर सकते हैं। सिंपल चौक से आप मार्किंग करके आप हॉपस्कॉच की मार्किंग कर सकते हैं, स्टापू खेल सकते हैं। रोप से आप टग ऑफ वॉर कर सकते हैं, सिंपल स्टिक और ये कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल भी यूज हो सकता है एज टीटी टेबल, टायर और ये सारे। सो बेसिकली इक्विपमेंट विच इज लो कॉस्ट और नो कॉस्ट। ये मूव एट होम की कुछ एक्सरसाइजेस है, आप घर में आप जा सकते हैं। यहाँ पे इस वेबसाइट में भी जा सकते हैं आप। उसको हर क्लास के लिए एक्टिविटीज क्या क्या कर सकते हैं घर में। अभी कोविड-19 में बहुत सारे एक्टिविटीज अगर आपको चाहिए तो आपको एक्टिविटीज बच्चों का असाइनमेंट की तरह दे सकते हैं। और सिंपल घर में भी आप फन एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। एज एन एग्जांपल आई जस्ट शो यू चिन्ह। बेसिक एक्टिविटीज, ये कुछ कोविड-19 की एक्सरसाइजेस है। बच्चों को एक एक्टिविटी दीजिए जिसमें आप बोलेंगे 30 मिनट से एक्टिविटी करना है संडे टू सैटरडे, एंड दे कैन डू सेल्फ पॉइंट्स। आप अलग अलग एक्टिविटीज हो सकता है कि 1 फॉरवर्ड रोल, 2 बैक रोल्स, 3 स्क्वाट्स, इस तरीके से 4 ट्विस्ट, इस तरीके से वो एक्टिविटीज कर सकते हैं हर हफ्ते में। एंड वो सबको रिकॉर्ड करें उसको कि क्या क्या है, सो दे कैन एक्चुअली गिव पॉइंट्स। एडिशन है, एडिशन एज एन एग्जांपल सिंपल आपको कहूंगी कि ये सर एक्शन के साथ कीजिए। 1 into 4 वॉशिंग मशीन की तरह स्क्वाट करना है, रेकिंग द लीव्स, पत्ते तोड़ना है, स्टार जंप्स करना है, स्क्वाट करना है, हाई हील्स करना है। सो ये मैथमेटिक्स भी सीख रहे हैं और फिटनेस भी कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन है, वॉशिंग द कार, अब उसके एक्शंस है, फ्लटर किक्स ये करते हैं, हॉपिंग ऑन 1 foot, स्विचिंग बटरफ्लाई लेग्स, इस तरीके से करना है, स्टार जंप्स करना है, फ्लटर किक्स करनी है, इस तरीके से। तो ये सब्ट्रैक्शन के साथ है। मल्टीप्लिकेशन के उस तरीके से, वॉश के वॉल पुशअप से, बियर्ड स्क्वाट है, ये सब चीजें घर में हो सकता है। डिगिंग द पिट, वॉकिंग ऑन स्ट्रेट लाइन, तो ये बच्चे। और डिवीजन है, डिवीजन मतलब इस तरीके के आप एक्टिविटीज दे सकते हैं बच्चों को करने के लिए। कायाकिंग है, मतलब डोंकी किक्स है, किक मार रहे पीछे से, पुल आउट के मोशन से। ये बहुत सिंपल सिंपल चीज है। बच्चे खुद भी, बच्चों को बोल सकते हैं आप 5 एक्टिविटीज खुद सोचो और बनाओ, मतलब इट डजंट नीड टू बी गिवन। चिल्ड्रन आर वेरी क्रिएटिव, दे कैन मेक देयर ओन एक्सरसाइजेस आल्सो। योगा के लिए उनको योगा के फ्लोज बनाएं, 2 या 3 योगा के, ट्री पोज, वॉरियर पोज, बच्चों को पता भी रहेगा। अब इंग्लिश का नाम बच्चों को, चिल्ड्रन एक्चुअली लव दिस इंग्लिश नेम्स। योगा के टर्म्स थोड़ा वृक्षासन थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगे ना लगे, यू आस्क देम कि इंग्लिश में आप करके बताइए उसका मतलब। सो दे आल्सो लर्न इंग्लिश, दे आल्सो डू सर्च, and when they make videos they actually spend a lot of time on redoing the same activities again and again, क्योंकि उनको वीडियो अच्छा परफेक्ट चाहिए, तो वो 4-5 बार वही एक्सरसाइजेस करना पसंद करते हैं। चिल्ड्रन लव टू डू ऑल दैट। सो मोटा मोटा ये आपको जो बताया। सो वी आर ऑन टाइम एग्जैक्टली। जस्ट टू समराइज, सो we are exactly on time. So for class pre-nursery up to class 5th जो हम बात कर रहे हैं, what is very important is the fundamental movement skills or physical activities have to be done. They have to be fun. Fun बहुत important है बच्चों के लिए। They have to have मस्ती। Fun and happiness is the most important thing। अगर इनको physical activity करना है, they love animals, they love figures, they love shapes। अगर tree pose बोले, boat की pose करे, so they love all that। They may not understand what is Naukasan, but Naukasan का मतलब boat pose है, तो they understand, so they can create their own poses also। Plan as per the space, time, equipment and people। ये बड़ा important है। हर स्कूल में हर एक के पास कुछ एक्सक्यूज होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, लोग नहीं है, स्पेस नहीं है। So we have given you examples जिसमें आप स्पेस नहीं है तो आप पूरे कॉरिडोर को, पूरे स्टेयरकेस को, रोड्स को, सबको आप यूज कीजिए। यूज एवरी सिंगल स्पेस। मैंने देखा हुआ कि अगर आप हॉपस्कॉच की मार्किंग आप कर देते हो, जो टीचर्स भी आते हैं, जो फ्री होते हैं, वो भी जंप कर करके जाते हैं, पेरेंट्स भी जंप करते हैं इस पे। सिंपल अगर आपने कुछ सर्किट बनाएंगे तो पेरेंट्स सीधा गेट से आपके स्कूल के अंदर डायरेक्टली नहीं आएंगे। वो आप देखेंगे इनवेरिएबली वो जो आप सर्किट कॉरिडोर में बनाते हैं उसी के थ्रू पेरेंट्स आते हैं। You convert your buildings, Bala, buildings as learning aids.
convert them into learning spaces. आप टिक टैक टो गेम खेल रहे हैं या स्नेक एंड लैडर खेल रहे हैं, आप ये सारे जो गेम्स है आप ये सारे उसके थ्रू खेल सकते हैं. Similarly, every child counts. जैसे बताया ना, last child in the class should be playing. And annual calendar हमने डिस्कस किया कि इसको 40 वीक्स को डिवाइड कीजिए इनटू टर्म 1 2 3 4, हर एक को 2-2 वीक में डिवाइड कीजिए, हर वीक की एक्टिविटी को 2-2 एक्टिविटी में डिवाइड कीजिए ताकि अगर रिपीट हो रहा है तो उसको बढ़ा सकते हैं. और हमने ये भी देखा कि 40 मिनट्स को हमने किस तरीके से यूटिलाइज करें कि 30 मिनट्स की मेन एक्टिविटी हो और 10 मिनट्स का वार्म अप और कूल डाउन हो and age appropriate equipment and settings. So ये मोटा, this is what it actually is. This is what we wanted to talk about. Yeah, so we are ready for any question or any activity that you want to do for a couple of minutes. Just a little stretch before we get into the questions. Not finding ना? Yeah, आपका ये voice audio. Let's do a little bit of 1 minute of stretching. That's about all your. Okay, we can go a little bit of stretching. You can stretch your arms forward, go to the side, left side, then right side, stretch up. Okay, now we'll be doing very tough exercise. You can put your one finger and stretch it backward. It is quite tough. Forward, side, left. Now do a rotation to the other side. Now you can practice with all your fingers after the class itself. Okay. Yeah. Yes, over to Gangwa sir for questions. Sir, would you like to take question directly or you want me to take question for you, Suji sir and Jahir sir? Both of us will take it. Yeah. So you can ask the questions. Okay. Just a minute. There are a lot of questions actually. So एक आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं वैसे मोटा ये कुछ ठीक है. ये लिखा था कि उनका कश्मीर में इंटरनेट आज डाउन था, so many of them they could not, some of them could not attend. The videos will be there on Sai LNCP Trivandrum YouTube channel. They can always share it with friends. जो आए मैं बाकी सबके साथ शेयर कर सकते हैं. So that is one. Okay, somebody has asked about the rotational exercises. It is Mr. Om Prakash Suman. He said, please specify which exercises are allowed or to be done in half rotation. Let me tell you, full rotation exercises are not recommended these days. That includes your even your neck rotation. Neck full rotation is not advisable. You can do half rotation front, then half rotation back, and half rotation to the side. Same with the trunk. Your trunk is, I also did in the physical jug. You can do half rotation front, half rotations to the from the back side, and then from the side. Same with the knee, because knee joint is something which is meant for flexion and extension. But if you are doing rotation, your knee may get injured. So in knee also, the rotational exercises are not advisable. Yes, you can do in your wrist because you are playing racket games, and so wrist you can do, ankle you can do rotational exercise, but for knee definitely you should totally not do. You are not supposed to do rotational exercise, and for hip and neck, half rotations on all sides are advisable. I hope I answered this question. Gangwar sir, any question? Sir, thank you. Now I'll take the next question. So the name is not there, but one of the participant, he would like to know what important of children's psychology. What important of children's psychology? What is the importance of children's psychology? Yes, means I think he or she just wanted to ask, unko kaise deal karna hai, kaise, I think something like that.
I think very important है साइकोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये टीचर्स और स्कूल के ऊपर बहुत डिपेंडेंट करता है कि बच्चों को जो है हम उनको कॉम्पिटिटिव बनाएं, उनको एक्सेलेंस हो सकता है बट उनके कॉम्पिटिटिव ऐसे ना बनाएं कि उनको अगर वो कोई मेडल ना जीते हैं, सो एवरी चाइल्ड इज अ चैंपियन। आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें मैसेज देना बहुत जरूरी है बच्चे के लिए, that every child is special, every child is a champion in this thing। तो हमें चैंपियंस फॉर लाइफ बनाना है बच्चों को। बच्चों को ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए कि जीत रहा है। फिनिशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाले कोई भी चीज कोई भी एक्टिविटी करते हैं हम बच्चों में वो साइकोलॉजी डेवलप करें कि वो एक्टिविटी को खत्म कर पाना। जैसे मैंने देखा हूँ एक स्कूल में हम काम कर रहे थे, काफी इस वीडियोस में था, सो द चाइल्ड हैड अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। तो स्कूल में हमने ये कल्चर डेवलप किया था बच्चों को एक्टिविटी फिनिश करना है, and the child would typically take double the time as anyone else। हमें उसको उसके ऊपर हंसना नहीं है, हमें इस तरीके से बताना है कि कुछ बच्चों का जैसे कुछ बच्चों का बैलेंस ठीक होता है, कुछ बच्चों का स्पीड ठीक होता है, तो इसका मतलब है कि उसका दूसरा एक्टिविटी ठीक नहीं होता है। लेकिन हमें वो सेलिब्रेट करना है ऑफ देयर एफर्ट। सेलिब्रेटिंग द एफर्ट ऑफ अ चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन द अचीवमेंट ऑफ द चाइल्ड। एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमें वो साइकोलॉजिकली बच्चों को उस तरीके से डेवलप करना है कि उनको हर एक्टिविटी को फिनिश करना है इन टुगेदर और इन ग्रुप्स। तो चाइल्ड साइकोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन द चाइल्ड इज यंग। उनको कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि अच्छा वो कर नहीं पाएंगे वो एक्टिविटी। इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई बच्चों को पेड़ चढ़ना है, बच्चों को पहले डर रहता है बट मे बी आफ्टर 5, 7, 10 days we should be able to give them that confidence that they can actually climb trees। तो हमें वो कॉन्फिडेंस देना बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वी नीड टू बी टीचिंग देम द वैल्यूज ऑफ स्पोर्ट्स एंड द स्पोर्ट्स इटसेल्फ। द स्पोर्ट्स में तो बच्चे अगर वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो ये आई थिंक चाइल्ड साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्पेशली स्मॉलर चिल्ड्रन। उनको उसमें डर नहीं रहना चाहिए कि वो जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक फन एंड हैप्पीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट। पॉजिटिव कोचिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमें बच्चों को उनको रिडिकल नहीं करना है, उन पे ये नहीं करना है। सो एवरी चाइल्ड इज काउंट्स इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। Yeah, thank you so much for the answer. Now, before we take the next question, I would like to uh, welcome our principal, sir, Dr. G. Kishore, sir, in the session. And, sir, we would like to welcome you. And also, I would like to welcome uh, Dr. Usha S. Nair, madam, as a panelist to have discussion on this. Madam, we welcome you. नमस्ते मैम। And Thank- so, the next question is how to motivate parents to participate kids, because हम लोग बात कर रहे हैं छोटे बच्चों की, बट इस टाइम पे पेरेंट्स बहुत कंसर्न होते हैं स्पेशली फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन कराने के लिए। तो हम उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट our experts to please give your views. Thank you. Janjana ji, you want to start? Yes. Okay. Look, parents' interest is extremely important, because if parents are not eager to send their kids to the play field, then it would become very difficult. So first of all, we need to convince the parents, and how we can convince. You can involve the parents also anyhow in the activity. Like you are sending some homework with the students, so parents should know how much their ward is growing in as far as fitness or skill. So that's how we can involve the parents, and when the parents are involved, definitely they are motivated. They will understand the need and importance of health and fitness and the value of the PE program. Would you like to add more on this, sir? See, actually जो parents है बड़ा important stakeholder है। I think between the parents and the teacher, two important stakeholders, major influencers for children। तो उनके लिए हम जैसे as an example बहुत सारे activities जैसे हम स्कूल में कराते हैं, we can also involve parents in those activities। As an example, जैसे बच्चों के लिए घर पे एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें creativity, we should actually be introducing creativity on the home assignments that we give it to children। and उसमें हम एज एन एग्जांपल फिटेस्ट फैमिली जो है हम मान लीजिए कि हम कोई स्पोर्ट्स डे हो रहा है या एनुअल जो हमारा पेरेंट टीचर मीटिंग हो रहा है, कैन वी हैव एक्टिव पेरेंट टीचर मीटिंग्स लाइक हमें केंद्रीय विद्यालय में किया था एक स्पेसिफिक डे में एक्टिव पीटीएम। एवरी स्कूल अक्रॉस इंडिया
actually had an active PTM where we had something called a SAM workshop, Sensitization, Awareness and Motivation Workshop for parents, जिसमें दो चीजें. तो पेरेंट्स के लिए जैसे बच्चों के लिए रिपोर्ट कार्ड देते हैं और फिटनेस असेसमेंट, वी आल्सो डिड थ्री टेस्ट पेरेंट्स के लिए. वन इज एजिलिटी सर्किट, इसका छोटा सा गेम, फिर उसके साथ एक फ्लेक्सिबिलिटी सिट एंड रीच बॉक्स का ये एंड बीएमआई, तीन चीज है. तो पेरेंट्स को 2 मिनट के अंदर उनका खुद का रिपोर्ट कार्ड मिलता है. तो पेरेंट्स आल्सो फील गुड अबाउट इट कि अच्छा फिटनेस रिपोर्ट कार्ड इस तरीके से होते हैं. बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि हम अपने टो को टच नहीं कर सकते ऐसे करके, पर जब हम सिट एंड रीच बॉक्स के सामने बैठ के हाथ से टच करते हैं, उनको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, एक्चुअल कितना फ्लेक्सिबिलिटी वो पता होता है. सिमिलरली उनके लिए छोटे छोटे फन गेम्स करें पेरेंट्स के लिए और टीचर्स. तो पेरेंट्स एज एन एग्जांपल जैसे रग्बी का एक छोटा सा गेम करें पेरेंट्स के लिए, जिसमें आप खाली रूल्स बताना है लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन उनको खुद को करना है. तो दो सेट्स ऑफ पेरेंट्स जब उसमें खेलते हैं, दे एक्चुअली वांट टू विन, दे वांट टू विन एट एनी कॉस्ट. एट द एंड ऑफ द सेशन आप उसको ऐसे कराइए कि आप वो अपने बीच में लड़ेंगे झड़ेंगे गेम के बीच में. एंड में फिर आप उनसे पूछेंगे कि आप क्यों जीतना चाहते थे. दे से कि दैट वी वांट टू गेट द मेडल. देन वी आस्क देम, बट अगर कैन यू विन इट एट एनी कॉस्ट. देन यू टीच देम द वैल्यूज ऑफ रेस्पेक्ट, values of trust, values of collaboration, trusting each other. So when parents actually experience the values of sports themselves, or things like please help me करके गेम है जिसमें बच्चे और पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स have to help the child to cross the barrier. एंड में जो कौन से रिले रेसेस है जिसमें हम करें कि पासिंग द बेटन फ्रॉम फादर टू मदर टू द ओल्डर चाइल्ड टू द स्मॉलर चाइल्ड, अगर एक रिले गेम करते हैं, you will see that there's a lot of trust that is developed between the father and the children, and you engage them in this. काफी सारे पीटीएम्स का आप एक्टिव पीटीएम में कन्वर्ट कर लीजिए. सिमिलरली आप जो रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, डोंट गिव द रिपोर्ट कार्ड, फिटनेस रिपोर्ट कार्ड फ्रॉम द पीटी टीचर, गिव द रिपोर्ट कार्ड टू द क्लास टीचर. जब क्लास टीचर खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, देन दे गिव आउट अ बैलेंस रिपोर्ट कार्ड. एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड और फिटनेस रिपोर्ट कार्ड दोनों साइड बाय साइड. So parents also get involved in that entire process. आपकी कोचिंग प्रोसेस, बहुत सारे पेरेंट्स है. मेरा एक दोस्त है, वो he was the head of Logitech India, गूगल में काम करता है. So he would teach the football team of the school. Can parents, lot of parents are very talented parents, can you involve parents in your coaching process, in your teaching process? Parents will get involved. There are a lot of parents who are engineers but also interested in football, science of sports, history of sports. A lot of things can actually be through the involvement of parents. Yeah, thank you. Thank you so much for replying. Now, I would like to invite our principal sir to give his views on the today's topic, that is planning and executing the play session. Sir, please. So I think that is the brass task for every physical education teacher: playing and execution and play session. That is where actually the delivery comes. So I think having immense experience, Mr. Sujit has given a lot of insight into it. And what is required here is that the play session should be something enjoyable and something which should release every participant. And it should be something appealing. At the same time, it should be scientifically designed. As rightly pointed out by Mr. Sujit, so it should be in accordance to the requirement and the demand of each participant, in accordance to the age, gender, the growth stage, and etc. So I think age appropriate activities, if it is given optimally to each child, we can ensure that the development of the motor qualities, all other physical and physiological qualities which are required to be developed will be optimally developed, and he becomes balanced. And I think from there we can get them ideally, picked up for each and every event, sport, where his talent lies. We can, when the physical education keenly observes the play session, and he can keep a constant watch on the child, we can definitely come to a conclusion on which are the faculties, which are the qualities which abound him, and which are the one from which he can become successful in a sport. Like every child has got an inborn talent in academic subject. So after some time only we come to know the teacher, when he
constantly he goes through the various academic sessions and participates in various exams. They come to know that a particular child is very good and he is brilliant, he has got talent in mathematics. Some of them might be extraordinarily good in science. Some of them will be in arts or maybe various other talent. Likewise, the child, when he regularly hits the play sessions, when he take up activities in accordance to the growth, we will realize, the we means the physical education teachers, the community coaches, we can realize where the potential lies. What is the genetic makeup? What are the qualities which are around him? And this we should be able to communicate to the child. We should make the child as well as the parent realize that the child has got this qualities. See, his body structure is like that. His body type is like this. His muscle, mass is like that, or whatsoever is there. His body, the skeletal, his system, the makeup of his torso, or maybe the lower extremities like that. This will be suitable to a particular sport. This we can make them to realize by showing the examples, living examples of the best, the world best champions. We can, if you can show the Michael Phelps body shape, the body type, we can say that the best body type for swimming. And if you Hussein Bolt's body you can show, you can say the best for the sprints. Maybe Messi or Ronaldo, you can show best for the football. So that some of the types, so we can equate them with the structure, the type which we have. So the sort of activities we are showing, he is showing interest where he is excelling. He is showing, a lot of resemblance to the people who excels. Then we can make him to realize, see, you have got a talent here. You can excel in this sports. You can, if you do likewise, we can make the child to realize. We can make the same thing. And also showcase the whatever is the rewards, awards, or the returns, the advantages are rightly pointed out by Mr. that in participating in sports. That definitely the child, we can make the parents and the child, whichever field he want to excel, this will be a contributing factor. We can cite any example. We can cite the example of Mahatma Gandhi. He was never known as a spokesperson, but he's known for his fitness. He has walked the length and breadth of the country. He led the freedom struggle, and his physical fitness was a factor. We can say the American presidents, may it be Abraham Lincoln, fond of cutting wooden logs, or maybe Barack Obama was fond of basketball, any other, everyone had a sport of their choice. Maybe if in the business sector, you can say that the people who are in the business sector too are Ratan Tata or maybe Ambani's. They are all interested and participate in sports. So there it will enable the child to groom his faculties, whichever field he would like to excel, and his participation in sports would be an added advantage to tune up his personality and character. I think this is what summarily, Sujit Panigrahi has very, very categorically and very in an interesting manner has predicted, and I think this is something every child can imbibe and every parent can also motivate the child. Thank you so much for giving me an occasion. Thank you. An excellent presentation by Mr. Sujit. Congratulations. Well done. Thank you so much. Yeah, thank you so much, sir. Now here we have with us our course coordinator, Dr. Usha S. Nair, madam. So I would like to invite madam for her views. Madam, please. Dr. Narendra, thank you so much. I'd like to congratulate Sujit and Janjaria for this wonderful presentation. But I just wanted some announcements to be made. That's why I'm here. I think I already informed Sujit. The attendance was good. To all the PE teachers, please see that you also attend the evening session. Your attendance will be taken care of. All those who attend and both the sessions only would be getting the participation certificate. We are indeed happy that you are attending the sessions well. And another important announcement is on this coming Saturday, we have a program at 11 where we have the 5 Singh sisters joining us. So I request all the participants to kindly make it be present. And we have a very outstanding performance by the 5 sisters who had come in. And last time they came, it was a wonderful session that they had. So I'd like to request all of you that this coming Saturday, we have a program at 11 with the 5 Singh sisters, along with their families, to know how physical education is helping them
speed to the international podium is actually what we think of. So only this is what I wanted to say. Secondly, tomorrow on, we're also going to have a practical session. Tomorrow we have Sanjay Prajapati. The last 10 minutes, maybe 12, 20 to 30, 10 minutes will be given for practical. So please see that you are well prepared and dressed for your practical session from tomorrow onwards. Also, I'm sure today also you had a practical session. And please do continue with this. And thank you so much, Sujit, for this wonderful session, because it's the most important thing. And I'm sure all our teachers have learned a lot, the PE teaching community. And Janjaria, thank you so much for this, for the wonderful session too. I'd also like to thank Kishore sir for giving his views. And I'd like to thank Dr. Narendra Gangwar for being host for this function. Sorry, for this program. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, and thank you. Yeah, thank you so much. And uh, it was really a great session. And I would like to congratulate both the speakers, Mr. Sujit Panigrahi sir and Dr. Biren Jandiya sir. It was very, clear and crystal topic you have made with very good examples. The experience you both have to conduct of these activities, and it was really great. And as we can see in the chat box, you got a lot of excellent, not good and very good. So that shows how you people prepared, and how the participant, they got satisfied after this session. So I would like to congratulate, and I would like to say thanks to both of you for being with us and sharing your thoughts and experience with the participant. Thank you, Mr. Sujit Panigrahi sir, and thank you, Dr. Biren Jarja sir, Thank you for so much. sharing your Thank time. you. And Thank you. yeah, thank you so much, all the participants. And as Madam announced, we have another session in evening 5 to 6:30. So be with us, and thank you each one of you for your time and your support. Thank you. Thank you. Thank you. Dr. Kishore. Narendra, I just forgot to take the name of Dr. Birendra. It was Yeah, both of them yeah. were together, Yes. but it just skipped. I just wanted to take, it was a best combination. So both of them together, I congratulate Dr. Birendra Janjaria also for your help, and always you are along with us. And it was very excellent presentation both of you have done. Thank you very much. Sir, we Thank you, had sir. a Thank lot you. of practical activities today by Sujit Panigrahi sir and Jandaria sir. They had given a lot of very good examples Yeah, of practical. you can't get a better, player than both of them now in the country. You can expect. He's a Sachin Tendulkar, sir. Yeah. Thank you, Kishore sir. Thank you, Usha ma'am. Many thanks to Sai, and also to Sai LNCB Trivandrum. We had a great session today. Thank you very Just much. running the poll also, so that people could. Yeah, thank you. This is to all the participants. Please do give your feedback on today's session if you liked it, or any suggestion that you have. You can drop us also an email on all our sessions. Kishore sir, we actually had a breakout exactly after 1 hour from the session. So we had what are the kind of activities that you can do in a classroom. So those are the examples that we did at exactly 12 o'clock. So. No, that is what I told about. The exposing to a session is something which is more relevant, and with some give practical insight on how exactly it goes. So we did a lot of desk exercises and also standing. I mean, what is it that you can do in the classroom? So those are the excellent, very nice, very innovative, very nice, well done. So there's a game called Simon Says. So Simon says to jump high. Simon says to turn. So that's a game that we did today. I think very well done. I think this type of exposure will definitely motivate our teachers and coaches. Yeah. Maybe we can do some practical session based on each context for each presentation. So maybe we can actually. So if the pandemic extends, and I think the second part we can do it also. We can think of that. Yeah. So this COVID-19. So the exercises that we did were relevant for COVID-19. So and also whenever there is rains or heavy, if the sun, if it is very hot outside, what are the things that you can do inside? So maybe for each of the session, we can think about some practical activities that we can do.
Kashmir is facing a lot of problem. I think internet is a problem today also. A lot of people have actually also expressed their. So Actually, we they can. are saying, they If are saying anything, that they are saying that they have 2G internet connection, so they would not So able we'll to have see the to. videos. So I Actually, think we should send the video links to them so they can see yeah. it at their own ease. So I think once every week maybe we can send out the video links to them. And Sujit sir, there was just some, questions in that question answer section regarding downloading the certificates. I have seen initially. So, that, Okay, downloading of certificate, I think, see, this is not relevant for the current batch, Yes, but people are actually, they are asking certificate of ICSE, they're asking questions of CBSE also here. So if there are some participants out here, they can actually go to the website and just log in. And for CBSE and ICSE, there is no restriction on the attendance because both were just 2 days program and they can download the participation certificate. And CBSE, all those who actually appeared for the examination, the certificates are ready. They can always download it. ICSE, the 22nd. For NLP, the will be, this will